तुम लोग जब तक ये करो बट एक बार तुम्हारा वो म्यूट रखो. So good afternoon all. Today we have meeting on SEBI LODR, and as you all are aware that various listed companies have so many obligations on their part where they are required to disclose not only their financial results but so many non-financial informations also. We have our own expert Vikas Gupta ji today to address you as a keynote speaker on the subject, and then all the three speakers will let you know about the exact and detailed provisions of the SEBI LODR requirement. So I directly ask Vikas ji to please guide us on the subject. Thank you, Bhupen. And good afternoon, everybody. So today we will be discussing on this master circular with regard to SEBI LODR and various circulars issued by the SEBI. So if anybody can let us understand what is this master circular. Start with the next one. So what is master circular actually? As you know, this SEBI LODR, this was issued in 2015 and it was made effective from 1st of December 2015. So this is called listing obligation and disclosure requirements. So basically this is a law or regulations which are for the listed entities. So it prescribes what are the listing obligations, as its name suggests, listing obligations. So what are the obligations on the part of the listed entities and how they are required to comply with those requirements, and disclosure requirement. So listing obligation and disclosure requirements. So what are the various disclosures which they have to make, right? So when this LODR was issued in 2015, prior to that there was an era of listing agreements. So there were various stock exchanges, like in addition to there was Bombay Stock Exchange, Calcutta Stock Exchange, Jaipur Stock Exchange, Lucknow Stock Exchange, and so Delhi Stock Exchange. So many exchanges were there. As of today, there are only two exchanges. One is BSE and another is NSE. So every exchange used to have their own listing requirements or listing regulations. So in 2015, this LODR was introduced by the SEBI, and they have made all the listing agreements unanimous. There was no differentiation between different listing agreements. All were at par. So this was introduced, implemented in 2015, and and after its implementation, from time to time, various circulars have been issued by SEBI. Those circulars may be in relation to disclosures, maybe in relation to clarifications, maybe how to implement these regulations. So various hundreds or we can say more than 100 of the circulars have been issued after 2015. And sometimes some circular was issued on like formats of the financial results. And thereafter it was superseded by another circular. Then some changes took place after that. So for the user, for a reader, for the user, how to consolidate all those circulars? See what is applicable as of now. So for your information, there is a system of issuing master circular by RBI also. There are various norms like IRAC norms. You must have heard income recognition and asset classification norms.
So many notification and circulars have been issued from time to time. So RBI has a system of issuing master circular. So master circular is what is? It is a combination of all the circulars issued so far and which are in 4 as of today. So you need not to go different years for extracting those circulars. So SEBI, first time SEBI has issued this master circular. So this is in relation to LODR, right? If we go through this circular, it says ki unless otherwise specifically mentioned in this circular, the provision of this master circular are applicable to those entities that have listed their specified securities. I think something they have missed out while writing this, because if you go through the definition of this specified, what are specified securities? So it is defined under section clause 2(1) ZL. It says specified securities means this is in the LODR. Specified securities means equity shares and convertible securities as defined under clause so and so of regulation 2(1) of SEBI capital and disclosure requirement regulation 2018. So if we this definition says it means equity shares and convertible securities. What are convertible securities? Which are compulsory convertible into equity shares. So if we go through this definition, it means it is applicable only on equity shares, because either it talks about equity shares as well as convertible securities. It means securities which are not convertible. This does not apply, but this is not a correct way of. I think something they have missed out by writing this. So I'll just tell for your information, this LODR is applicable on which entities, or it is applicable on whom. So this clause 3 of LODR says, unless otherwise provided, these regulations shall apply to listed entity which has listed any of the following designated securities on recognized stock exchange. So it covers specified securities listed on main board or SMA exchange or innovators growth platform. So it talks about specified securities, means it is referring to that definition which includes equity shares and convertible securities. Then LODR also applies on non-convertible securities like debentures, non-convertible debentures or preference shares. Then Indian depository receipts, securitized debt instruments, security receipts, units issued by mutual funds, and any other securities as may be specified by the book. So these all are covered under LODR, and these circulars have been issued in connection with all these securities, which are covered under LODR. So this is a gist of all those circulars. Now, this one thing is also very important, on whom this LODR is applicable. We have discussed this is applicable on these listed entities, whether it is applicable only on listed entities or some other stakeholders also, like depositories and statutory auditors. Then it also talks about material subsidiaries of listed entities. So whenever there are subsidiaries or joint ventures or associates, then the company needs to prepare a consolidated financial statements. And those consolidated, so for example, a company, a holding company is a listed company and Ind AS is applicable on that company. So all its associates, joint ventures and subsidiaries, they have to follow this Ind AS. So because CFS, consolidated financial statements, are required to be published by the listed entity. So it is, they have to follow this SEBI LODR for publication of CFS, preparation and publication of CFS. So it says this LODR will apply on also on material subsidiaries of listed entities, because unless they follow the LODR, how the parent will prepare, how the parent will follow. So as far as publication of financial results are concerned, this LODR applies on material subsidiaries of the holding company. It is applicable on statutory auditor of holding company as well as statutory auditor of all those companies which are material subsidiaries or associates or joint ventures. So basically, this is a gist of all the circulars. And if we go to the index of this master circular,
it has various chapters which we would be discussing today. Like the first part deals with uniform listing agreements. So I informed you that earlier there used to be different listing agreements across different exchanges. Now there is a uniformity. So it talks about that. And second, this periodical disclosure, non-financial. So there are two types of disclosures: financial disclosures and non-financial disclosures. So financial disclosures are publication of financial results, related party transactions, and all those which are having some financial impact. Non-financial means like holding of specified securities, shareholding pattern, corporate governance, then disclosure for IDR, Indian Depository Receipts. So there are various non-financial disclosures. Then it also talks about annual disclosures. Annual disclosures include the secretarial audit report and or business responsibility and sustainability. Can anybody know about what is this business responsibility and sustainability reporting? It started 2 years back. It is applicable on top 500 listed companies. Now it is 1000. Earlier it used to be top 500 companies. And this, what are the ethics which the business has to follow? What are the responsibilities towards society? How, what is the sustainability reported? So all those things which are non-financial things are to be, there should be a report. How they are how they are taking care of their human resources and all society, nearby villages, all those things. This is covered under this type. So if anybody, you can go through the ONGC annual report. It is having this business responsibility and sustainability. Then there are certain event-based disclosures. Sometimes the listed entity has to disclose within 30 minutes, sometimes within 15 minutes. So there are event-based disclosure, which so it has to be disclosed immediately. 30 minutes is a very short time, but you have to disclose. Then other obligation and disclosure requirement, like manner of achieving minimum public shareholding. So there are various circulars covering all these chapters. So they have given a gist, or they have consolidated all those circulars. They have brought those circulars at a single place. It also talks about penal actions. There are various circular penal actions. Like if you don't submit your financial results, what is the time limit of submission of unaudited financial results? Yeah. Obviously, on quarterly basis, you can submit the unaudited financial results. On annual basis, you have to submit on your audited results. What is the timelines? 60 days. So everybody has to follow. Every listed entity has to follow. If you don't follow, there are certain penal actions. For example, for non-submission of financial results, there is a penalty of 5,000 rupees per day. So all those tables are also included in this master circular. So this is all about this master circular. Now I request the speakers to take the session. Thank you. Yes. Sir, like you said that top 1000 listed companies have to follow social responsibilities, business responsibilities and sustainability. So then what is the difference between the corporate social responsibility and business responsibility? Corporate social responsibility is dealt by section 135 of the Companies Act. Then the company has to spend based on its profit on the various, like Schedule 7 covers the various activities where company has to spend. This is a spending. This business responsibility is what are the responsibility of a business towards society, towards people, towards various other sectors. So how they are following it, so that reporting they are required to include in there. So to support it further, corporate social responsibility is like you are incurring certain expenditures as required to be spent as per the company law on various activities which are listed in Schedule 7 of the Companies Act 2013. So then there are so many activities: education, poverty, and all these expenditures are incurred outside office on some other. Maybe it is a contribution to some trust, some foundation, and all that. Business sustainability and this what is that word? Sustainability development. Yes, sustainability development. That is like, you know, how your business is impacting, apart from the financials, the other aspects of the society.
आपका जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको 1000 लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो दैट इज एन इम्पैक्ट व्हिच हैज बीन क्रिएटेड। आपने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है ना जो कुछ पॉल्यूशन कम कर रहा है या कोई हजार्डनेस को कम कर रहा है, तो दैट इज द इम्पैक्ट व्हिच यू आर क्रिएटिंग। या आप जैसे अभी जो ईवीज है ना, तो ये कह रहे हैं कि ये कार्बन जो उत्सर्जन होता है उसको ये कम कर रहे हैं, सो दैट इज द इम्पैक्ट व्हिच दे आर मेकिंग एंड इट इज बेसिकली ह्यूज एरिया एज ऑफ नाउ, जो कि बहुत सारे कंसल्टेंट प्रैक्टिस में, जैसे मैंने देखा बिग फोर के एक प्रैक्टिसर है, वो बेसिकली एक कंसल्ट इनटू कंसल्टिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पूरा वही करते थे। उन्होंने केपीएमजी छोड़ा, पूरा इसमें निकल गए और विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर ही मेड ए टीम ऑफ 400 पर्सन्स जो कि इसी काम में है वर्ल्ड वाइड, कि वो ये कंसल्टिंग करते हैं कि यार आप अपने बिजनेस में क्या क्या इस तरीके के इंप्रूवमेंट्स लेके आओ, so that you can actually get better point on account of these business sustainability and Responsibility. ESG, business responsibility on this. So the point is that this is also another area जो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो बात कर रहे हैं, ये भी इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे एज ए कंसल्टेंट हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। So now over to the speakers. Good afternoon, everyone. Myself, Harshri Khandelwal. Today, I, Mehul Bora, and Lokesh Mirchandani are here to speak on the topic Master Circular for Compliance with the Provisions of the Securities and Exchange Board of India, Listing Obligations and Disclosure Requirements, Regulations 2015 by listed entities, which is dated July 11, 2023. This LODR has come into effect from December 1, 2015, replacing the erstwhile listing agreement regime. The reason behind preparation of this master circular is to enable the users to have access to the provisions of the applicable circulars issued till June 30, 2023 at one place. Nearly 67 circulars which were issued earlier before the issuance of this master circular are now rescinded. Before getting deep understanding of this master circular, let us first understand its applicability. It is applicable on all listed entities that have listed their specified securities, all recognized stock exchanges, all the depositories, and other stakeholders, which include statutory auditors, depository participants, registrar and transfer agents, material subsidiary of listed entities, e-voting service providers, etc. Basically, this master circular is divided into 7 chapters. To start with, Chapter 1, Uniform Listing Agreement. Listing agreement is a document which a company signs with the stock exchange that it will abide with the stock exchange regulations. So the requirement of executing a listing agreement with the stock exchange is specified under different regulations related to initial issuance of capital, the details of which are: in case of specified securities, equity and convertible securities on main board or SME or IGP or Indian Depository Receipt, compliance is required under Regulation Securities and Exchange Board of India, Issue of Capital and Disclosure Requirements, Regulations 2018. So before moving further, let us first understand what does main board means. Companies with minimum post-issue paid-up capital of rupees 10 crore can raise funds and can get listed on NSE or BSE through main boards. Companies with minimum post-issue capital of rupees 1 crore and maximum post-issue capital of rupees 25 crore can raise funds and get listed on NSE or BSE through SME. And IGP is a venue for technology-oriented startups with early-age investors so that it can list its securities with relaxed framework. In order to give effect to the requirements of mentioned regulation, a simplified listing agreement, which is uniform across all types of securities, is prescribed in Annexure 1 to this circular. You all may have looked on the Annexure 1 of this master circular. It is for the issuer who is desirous of continuing the listing of its securities on the exchange.
a listed entity which had previously entered into agreements with recognized stock exchanges to list its securities was required to execute a fresh listing agreement with such stock exchange within 6 months from the date of notification of such LODR regulation. Further, moving to Chapter 2, periodic disclosures or non-financial disclosures. This Chapter 2 is divided into 3 sections, starting with Section A, holding of specified securities and shareholding pattern. In nutshell, this requires disclosure of shareholding pattern and the manner of maintaining shareholding in dematerialized form. Our security holders are divided into 3 categories, which are promoter group, public, and non-promoter, non-public. We'll get better understanding of these categories further. So details of shareholders must be accompanied with PAN and folio number. Folio number is a unique investor identification number. Disclosure of public shareholding is required. So name of the shareholder having holding of 1% or more, and name of the person shareholders who are persons acting in concert. So person acting in concert are the people who are is a group of individuals who cooperate with each other to obtain or consolidate control over the company. The shares of a listed entity underlying the depository receipt, that is the depository receipt which will be later converted into equity shares, shall form part of public shareholding of the company only if the holders of such depository receipt has a right to issue voting instructions and such depository receipts are listed on international exchange. The listed entity shall also ensure that the shareholding of employee trust and scheme are shown separately in the category of non-promoter, non-public. So now let us understand manner of calculation of shareholding. But before, as we have already understood, that there are categories of security holder, which is non-promoter, non-public, public, and promoter. Non-promoter, non-public includes the shares held by depository receipt holders, which don't fulfill the conditions laid down in Rule 2E of Securities Contract Regulation Rule 1957. Now, Rule 2E is what we have discussed before. That is, the shareholder, that is the depository holder, should have right to issue voting instructions, and such depositories should be listed on international exchange. Also, non-promoter, non-public includes shares held by employee benefit trust and schemes. So, total shareholding will be calculated as A2, which is shares held by employee benefit trust, plus B, which is shares holded by public, which fulfills the condition specified in Rule 2E of Securities Contract Regulation Rule 1957, and share held by promoter and the promoter group. So they are generally, आप लोग सुनते हैं ना कि आज foreign investors जो portfolio investors होते हैं, FPI and all that, and FIIs, so they have sold their investments और market down आ गया, कुछ आ गया, तो ये other than public ये वो वाले investors हैं, तो FIIs हैं, non-public as well as non-promoters. I think कोई है? Percentage of promoter shareholding will be calculated as C, that is promoters and promoter group, share held by promoter and promoter group, divided by total shareholding as we have calculated in point A. And same goes with percentage for public shareholding, which will be calculated as public shareholding divided by total number of shares. Now, as we have read that disclosure is required of shareholding pattern, then this format is prescribed in Annexure 2 of this master circular. Further, this Annexure 2 is classified in contains 6 separate disclosures, which requires summary statements showing holding of specified securities of listed entity, which is in Table 1 of Annexure 2. Statement showing holding of specified securities by promoter and promoter group, which should be disclosed in Table 2 of Annexure 2. Statement showing holding of specified securities by public holders, which is required to be disclosed in Table 3 of Annexure 2. Statement showing holding of specified securities by the non-promoter, non-public shareholders in Table 4 of Annexure 2. Statement showing details of significant beneficial owners in Table 5 of Annexure 2. And statement showing foreign ownership limits, which is shown in Table 6 of Annexure 2. So you are going through those tables also? कोई बात नहीं ना, तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं तो ये समझ ही नहीं आएगा. अगर तेरे को ये लगता है कि लेंदी हो गया, तो अच्छा, you have not. Actually, hyperlink से PDF ही खोला है, सीरीज पेज पे नहीं जाना.
अच्छा उस पेज पे नहीं जा रहा है तो बट दैट शुड हैव बीन डन, नहीं तो क्या होगा कि वो पिक्चर समझ में नहीं आएगा। आई टोल्ड यू कि सबका अलग अलग पीडीएफ फाइल कर देना चाहिए था so that we are able to communicate that what picture of this table is there, उसमें क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है। सो एक दो टेबल्स वी कैन एक्सप्लेन कि किस तरीके का उसमें रिपोर्टिंग है। और अगर आप देखेंगे ना ये सारी टेबल्स पब्लिक डिस्क्लोजर्स जब कंपनीज करती है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा ग्रुप की कंपनीज हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, तो यू विल फाइंड दैट हियर दीस डिस्क्लोजर्स आर देयर कि उसमें किस किस का क्या क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर्स का कितना है, नॉन प्रमोटर्स का कितना है, एफआईआईस का कितना है, पब्लिक का कितना है। तो एंटायर दैट डिस्क्लोजर इज देयर, so you can just run through those tables for 1 or 2 minutes so that one can get. So you all may have look on the format of disclosure of shareholding pattern of a listed entity. This is table 1 for summary statement showing holding of specified securities of listed This entity. is the mails. तो ये हर क्वार्टर जाती है, एवरी क्वार्टर दिस गोज। तो इसका भी आपको एक ऑडिट करना होता है। ये इट इज ए नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखा जाए तो, क्योंकि इसमें रिजल्ट नहीं आते हैं, लेकिन एज ए कंपनी सेक्रेटरी ऑफिसर और कंप्लायंस ऑफिसर ये ऐसी टेबल नहीं होती कि जो हमेशा हर महीने हर क्वार्टर में सेम ही होती है। थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। कई बार मान लीजिए प्रमोटर्स ने मार्केट से कुछ खुद ही परचेज कर लिया अपनी कंपनी का, तो वो भी इसके अंदर कोई डेविएशन आएगा तो दैट विल आल्सो कम एज ए disclosure in this quarterly disclosure. This is the disclosure done by Reliance Industries Limited for 31st March 2023 of its shareholding pattern. ये भी एक कई बार ऑडिट का सवाल होता है। एज एन ऑडिटर वी नीड टू समटाइम चेक दिस आल्सो कि ये डिस्क्लोजर्स प्रॉपर गए या नहीं गए। 2. Statement showing holding of specified securities by promoter and promoter group. तुम पैन नंबर वगैरह भी जाते हैं? अच्छा ये अच्छा। Table 3. Statement showing holding of specified securities by public shareholders. Table 4. Statement showing holding of specified securities by the non-promoter, non-public shareholders. Table 5. Statement showing details of significant beneficial owners. इस पर पेन जाएगा। बट ये तुम्हारा इसमें चेंज नहीं हुआ है स्क्रीन। Sir, actually slide share. हाँ तो वो थोड़ा ठीक करो। ठीक है, यू कैन कंटिन्यू। Table 6. Statement showing foreign ownership limits. Going back to the slide, presentation. Chapter 2. Periodic disclosures on non-financial disclosures. Holding of specified securities in dematerialized form. So, sub-regulation 2 of regulation 31 of LODR regulation requires that 100% of shareholding of promoter and promoter group should be in dematerialized form. However, exemptions may be allowed for the above condition if promoter shares which were sold in physical mode and have not been lodged for transfer with listed entity. That is, promoter ने अपने shares sell कर दिए physical mode पे और उसने जो sell किया उसको lodge नहीं किया, that is entity को communicate नहीं किया. Matters that are subjudiced before any court or tribunal concerning shareholding of promoters or promoter group, either in part or in entirety, there is any court case going on regarding the promoter shareholding, or shares that cannot be converted into dematerialized form due to death of any promoter. Further, at least 50% of non-promoter holding shall be in dematerialized form. The listed entity shall take necessary steps for achieving the same. Display of holding of specified securities on websites of stock exchanges also required. तो ये अभी भी कुछ कंपनीज के जो पुराने लिस्टेड कंपनीज हैं, shares have been dematerialized or not yet? Almost all have been dematerialized, but कुछ ऐसे लोग हैं जो शेयर रख के भूल गए, उनकी डेथ हो गई और वो सूखे संदूक में बंद है आज भी शेयर से। ऐसे हैं जो आज भी फिजिकल फॉर्म में है। अब ऐसे केसेस में अगर डिविडेंड भी
वो पे कर रही है कंपनी एंड इफ दे आर नॉट एनकैशिंग दैट डिविडेंड तो फिर उसका इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है. Moving to section But B of nobody can trade in the securities unless those are in demat. मैंने आज मॉर्निंग में एक नोट भेजा था जिसमें अब नाउ प्राइवेट कंपनीज आर आल्सो ब्रॉट अंडर दिस Dematerialization. not SEBI under companies. Moving to section B, report on compliance with the corporate governance provisions specified in LODR regulation. So corporate governance refers to a system of rules, policies, processes by which a company is directed and controlled. It usually aims to maintain maintain balance between interests of various stakeholders. Stakeholders include shareholders, suppliers, lenders, consumers, government, community, etc. The listed entity is required to submit compliance report on corporate governance in the format as under to recognize policy. So on quarterly basis in Annex 3 of this master circular, at the end of financial year, for the whole financial year, in Annex 4, at the end of 6 months from the close of financial year, along with second quarter report of the next financial year in Annex 5. That is like 31st March 23 की देनी है, तो ये अपन देंगे 30 सितंबर के साथ ही दे देंगे. उसके अंदर अपन को 30 सितंबर की compliance report भी देनी होगी, 31st March वाली भी देनी होगी. Annex 6, which requires disclosure of format for disclosure of loans, guarantees, securities, etc. to be submitted twice a year on half-yearly basis by the listed entity at the end of every 6 months of the financial year. Where the corporate governance provision is not applicable on any entity, then the entity will be required to submit a declaration which should be signed by compliance officer or chief executive officer, accompanied by certificate from practicing chartered accountant or practicing company secretary at the beginning of every financial year. Moving to section C of chapter 2, disclosure norms for Indian depository receipt. So what is Indian depository receipt? Indian depository receipt is basically a financial instrument which is transferable, issued by overseas corporation, that is जो companies India के बाहर हैं जिनके equity shares India में listed नहीं है, so that they can raise funds from Indian stock and financial market. So sub-regulation 1 of regulation 69 of LODR regulation requires listed entities shall file the stock exchange the Indian depository receipt holding pattern in Annex 7. Sub-regulation 1 of regulation 72 of LODR regulation requires the listed entity to comply with corporate governance provisions as applicable in its home country and other jurisdiction in which its equity shares are listed. And sub-regulation 2 of regulation 72 requires such listed entity to submit a stock exchange a comparative analysis of corporate governance provision in its home country and other jurisdiction in which its equity shares are listed. Information furnished above will be required by the listed entity should show it on the website. Sub-regulation 3 of regulation 76 of LODR regulation specifies that IDRs shall have two-way fungibility in the manner specified by the board from time to time. Two-way fungibility means that the IDR shall be converted into equity shares and equity shares shall be converted into IDR. So Annex 8, that is procedure for two-way fungibility. The partial two-way fungibility means that the IDR can be converted into underlying equity shares and the underlying equity shares can be converted into IDRs within the available headroom. Now headroom means that is IDRs originally issued minus IDRs outstanding, that is IDRs that will be converted in future. So guidelines for fungibility of further IDR issuance. IDR shall not be redeemable into underlying equity shares before the expiry of 1 year period from the date of listing of IDR. Second, if 1 year from the date of issuance of IDR has completed, then the issuer shall provide two-way fungibility to the IDR holders. The issuer shall provide said fungibility to IDR holders in any or both following basis. That is, कि वो IDR को underlying shares में convert कर दे या फिर IDR को शेयर्स में कन्वर्ट करके उन शेयर्स को फॉरेन मार्केट में सेल करके और जो शेयर्स को सेल करके जो प्रोसीड्स आ रही है वो आईडीआर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. एंड फोर्थ सेज all the IDRs that have been applied for fungibility by holders shall be transferred to IDR redemption account at the time of application. Coming to guidelines for fungibility
of listed. Sorry. Guidelines for fungibility of existing listed ideas, which says after completion of 1 year period from the date of issue of IDR, issuer को every year redemption or conversion का option provide करना है idea holders को, and that should be up to 25% of ideas originally issued. What is fungibility? So converting idea Both way into converting. issuers. So process for two-way fungibility. The periodicity for idea fungibility shall be at least once every quarter, and the fungibility window shall remain open for a period of at least 7 days. Total number of ideas available for fungibility during one fungibility window shall be fixed before opening of the window. In case of request for conversion in excess of limit available, that is the as we have discussed कि idea कितनी conversion होगा वो पहले decide हो जाएगा. But by any chance की limit excess हो जाती है, so the manner of accepting idea for conversion or redemption shall be done on proportionate basis. All the ideas applied for fungibility shall be transferred to idea redemption account at the time of application, and in any case अगर उनके idea convert नहीं हो पाते, redeem नहीं हो पाते, तो अपन उसको वापस से idea holder के account में transfer कर देंगे. In So case this is a continuous process. Investors can, apart from those windows which are there, they can convert it anytime. मतलब time 7 days जो time In those times they can convert. Those times which are mentioned over here. And is there any specific Once in a quarter. okay, well, and any price that at which price these will be converted? In case of option of converting ideas into underlying shares and providing the sale proceed to idea holders, issuer को अपने fixed or variable cost specify करने हैं, and the cost shall not exceed 5% of the sale proceeds. Existing issuers shall provide the option of redemption or conversion within 3 months of notification of these guidelines. However, जो existing issuer है idea के, वो भी new जो issuers को ये मिला है option, वो redeem कर सकते हैं, but they have to give advertisement in leading English and Hindi national daily newspaper with wide circulation, as well as notification to the stock exchange giving the operating guidelines for redemption or conversion of ideas. And what is the purpose of this? To particularly attract the foreign investors. In order to enable investors to make well-informed decisions, Regulation 32 of LODR regulations has specified various requirements with respect to submission of financial disclosures, which requires timely and adequate disclosures of financial results. So as far as these financial results are concerned, so दो clause हमेशा याद रखने आप, clause 33 and clause 52. Clause 33 is applicable on those entities, listed entities, which are their equity shares listed on the stock exchange. And clause 52 is applicable where the equity is not listed, but other securities are listed. For example, bonds, debentures. So, and if any entity has both equity as well as securities listed, debentures listed, then both clause 33 as well as 52 will apply. 33 is having some relaxations because this is applicable on those companies which are not having their equity listed. So if the company is having both equity and this debentures listed, then both will apply. But the clause 33, since it is more stricter than clause 52, it is not having some relaxation. So that company needs to follow clause 33. If something is relaxed in clause 52 on a specific matter, then the clause 33 will prevail over clause 52. For example, if a company is having equity listed, then they have to submit their financial results both standalone as well as consolidated on quarterly basis. But in case where the equity is not listed but debt is listed and clause 52 is only applicable, then that company is to submit the consolidated financials only on yearly basis, not on quarterly basis. But if any company is having both listed, then they have to submit the consolidated also on quarterly basis. So formats for submission of financial results. To ensure comparability between financial results, uniformity and parity in disclosures made by listed entities across
across stock exchange is essential. Therefore, the formats for unaudited or audited quarterly financial results, that is statement of profit and loss, and the unaudited or audited half-yearly balance sheet to be submitted by listed entities shall be as per formats for balance sheet and statement of profit and loss specified as prescribed in Schedule 3 of the Companies Act 2013, as amended from time to time. Listed banking and insurance companies shall follow the formats as prescribed under the sectoral regulators. The statement of cash flows shall be in terms of relevant accounting standard, that is Accounting Standard 3 or India 7 as applicable. While publishing the quarterly financial results, listed entities shall also publish the figures relating to periods as mentioned below, like 3 months ended. Let me show you all. Quarterly financial results published by Reliance Industries Limited. It shows quarterly results, that is ended 30th September. Then quarterly results for the quarter ended 30th June 23 and for quarter ended 30th September 2022, that is corresponding quarter. Then half yearly ended 30th September 23 and 30th September 22 for the corresponding previous year, half year ending, and of year ended 31st March 23 audited financial. However, the annual audited financial results may not include columns and figures related to previous quarter, year-to-date results, and corresponding 3 months in the previous year. You have taken those results from Reliance. Yes. Can you open it again? So Reliance has not mentioned unaudited in these columns. So maybe that they have mentioned in the report itself that these are. But it is requirement. It is You requirement. can open This would have. there is a requirement whether it is audited or not. Yes. So these are very minute things. And there are huge penalties on such. If something is messed up, like we have seen in Reliance, there are huge penalties. You can just share the entire screen क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आ रहा है. Share screen कर लो. अभी अब जब भी तुम चेक करोगे ना, now it is there. In case of segment information, following minimum information is required to be disclosed as specified under Accounting Standard 17 and Ind AS 108, that is segment revenue, segment results, segment assets, and segment liabilities. Unallocated items, wherever applicable, shall be shown separately in respect of the above information. The financial results published in the newspaper shall be in the format as specified in Annexure 9 to this circular. Let me show you all Annexure 9 of this master circular. In this format, financial results are published in the newspaper. Disclosure of reasons for delay in submission of financial results. So whatever is to be published in newspaper, that is a concise version of those results, because full cannot be printed on a newspaper, but it is requirement that the link should be given so that the investor can open that link and can view the full result. The quarterly audited or unaudited and the annual audited financial results have to be submitted within a period of 45 days and 60 days respectively from the end of the quarter or financial year. If a listed entity does not submit such financial results in accordance with the timelines, then the stock exchanges levy penalty on the entities, and the listed entity shall disclose detailed reason for such delay to the stock exchange within 1 working day of the due date of submission. Procedure and formats for limited review or audit review of the listed entity. The statutory auditor of a listed entity shall undertake a limited review or audit of all the entities or companies whose accounts are to be consolidated with listed entity as per relevant accounting standard.
which is Accounting Standard 21 and Ind AS 110, in accordance with guidelines issued by board on this matter. All listed entities whose equity shares and convertible securities are listed on recognized stock exchange, all statutory auditors of such entity, and all entities whose accounts are to be consolidated with listed entity, and the statutory auditors of entities whose accounts are to be consolidated with listed entity shall follow the procedure as applicable given at Annexure 10 to this circular. Annexure 10 we will be discussing further. The format for limited review or audit report to be provided by statutory auditor is given at Annexure 11 of this master circular. The listed insurance company shall follow format as prescribed by IRDAI. Disclosures of the impact of audit qualification by listed entities. Audit report with modified opinion shall be accompanied by a statement of impact of audit qualification, and where there is a qualification and audit report, then the management of listed entity shall have option to explain its views on the same in Annexure 12 of this master circular. For audit reports with unmodified opinion, a declaration to that effect is required to be submitted to the stock exchange along with audited financial results. So Annexure 10 is about procedure for limited review of the audit of all the entities, companies whose accounts are to be consolidated with listed entities. The objective of this procedure is to ensure that all the statutory auditors undertaking the audit or review of consolidated financial statements obtain desired information as required under SA 600, which is using the work of another auditor, and guidance note on consolidated financial statements as issued by ICAI. The audit or review of consolidated financial statements shall be in accordance with mandated standards on auditing, standards on review engagement, and guidance notes. The principal auditor, that is the auditor of the parent company, principal auditor is the auditor जो कि अपने opinion express करता है on the consolidated financial statements, should plan and perform an audit to obtain sufficient and appropriate audit evidence to express an opinion on consolidated financial statements. Pursuant to above, principal auditor को all the procedures follow करने हैं, which is obtaining an understanding of consolidation process, discussing with other auditor and management component business activities that are significant, and identify significant and non-significant business activities. So principal auditor will determine significant components on the basis of his understanding of risk associated and professional judgment. However, significant components selected by the principal auditor would represent those components which together with parent company would in the aggregate represent at least 80% of each of the consolidated revenue, assets and profits. That is, जिस भी एंटिटी का जब अपन पेरेंट कंपनी से कंसोल करेंगे रेवेन्यू असेट्स एंड प्रॉफिट that it should form at least 80% of the consolidated revenue, assets and profit. Also, auditor will be required to determine the materiality for the consolidated financial statements. This 80% means if the parent is audited by one firm and its components are audited by various other firms, then at least 80% of the figures of assets, liabilities, income and expenditure should be audited or reviewed by those component auditors. So as a auditor of a holding company, I should get at least 80% reviewed or audited. Otherwise, this will not comply with the requirement, and that will not be considered as a review. The CFS would not be considered as a review. So 80% requirement is there. So this calculation need to be seen every quarter. Yes. Every quarter. When planning to use the work of another auditor, the principal auditor shall consider professional skepticism where the other auditor is not the member of ICAI. Also, Now this Yes. particular line, Yeah. the principal auditor has to perform the professional skepticism if the auditor of the component is not a member of ICAI. So when this is applicable? और इसका एक बहुत बड़ा केस हुआ है अभी रिसेंटली, इस वाली लाइन का एक केस हुआ है इंडिया में रिसेंटली, बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको राहुल गांधी बार बार बोलता है. अडानी के जो रिजल्ट्स आए थे लास्ट टाइम,
उसका डिलॉइट या KPMG ऑडिटर था, डिलॉइट था, उन्होंने मॉडिफिकेशन दिया रिजल्ट्स में कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका ऑडिट में उस पर मैं रिलाई नहीं कर सकता, जबकि उनके कंपोनेंट्स का ऑडिट ये इंडियन सीए फर्म ने किया था। तो ये क्या कहता है, इफ इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ ICAI, तो अगर ICAI ने मेंबर ने ऑडिट किया है और ऐसे 600 फॉलो किया है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर हैज टू रिलाई। ऐसा नहीं प्रिंसिपल ऑडिटर उसकी जगह ऑडिट करने चला जाए। तो डिलॉइट ने क्वालिफाई किया, पढ़ना अगर अडानी के रिजल्ट देखोगे आप जून के या मार्च के, उसके कारण अभी NFRA ने उसके इंक्वायरी चल अभी रिसेंटली इनिशिएट किया, जो उसकी रिपोर्ट थी ना हेम्बर्ग, उसके कारण उसने ये लिखा था कि मैं रिलाई नहीं कर सकता कंपोनेंट्स की रिपोर्ट। तो आप देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट को कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, कितना ट्रस्ट है, तो हमें कितना कॉशियसली काम करना है। लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉ के अंदर लाइन लिखा हुआ है कि साहब आप अगर किसी मेंबर ने उसको साइन किया तो देन यू हैव टू रिलाई। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था ना कि मेरे सिग्नेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिग्नेचर है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कितनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर आपको सम्मान मिलता है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही बड़ी है ना। और एक लाइन यहाँ पे, इस लाइन का जो दूसरा इश्यू है, ऐसा कहाँ हो सकता है जहाँ पे इट इज नॉट बीन साइंड बाय दी अनदर ऑडिटर, बाय दी अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेंबर ऑफ ICAI, मेंबर ऑफ ICAI। तो जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है और वहां के किसी मेंबर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप रिलाई कर रहे हो, तो क्या वो फिर यहाँ पे जो डिलॉयट ने व्यू लिया वो लिया जा सकता है? नहीं, उस केस में जनरली जो ऐसी सब्सिडीज होती हैं जिसका फॉरेन कंपनी से फॉरेन ऑडिटर आता है, तो उसका फिर इंडिया में उसको कन्वर्ट करके ऑडिट कराना। तो दैट मीन्स उसको फिर मेंबर ऑफ ICAI से कन्वर्ट करा के और आपको ऑडिट करा। The auditor will also be required to determine the nature, timing, and extent of the procedures to be performed. Also, design and perform of audit review procedures on consolidated financial statements arising from special considerations relating to consolidation process. When considered necessary by principal auditor, he may require the other auditor to answer a detailed questionnaire, and the other auditor will be required to answer such questionnaire on timely basis too. While the principal auditor should consider the significant ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए एज ए कंसोलिडेटिंग ऑडिटर, है ना। सो एवरी क्वार्टर वी नीड टू कम्युनिकेट विद द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑडिटर्स। ये पहले जब ऐसे 600 था तो उसमें ये बात लिखी हुई है, सेबी LODR में ये पहले बात नहीं लिखी हुई थी। पिछले 3-4 साल से ये स्पेसिफिक प्रोविजन आए which are based Actually, on they have incorporated SE600 in SEBI Yes. LODR itself. While the principal auditor should consider the significant findings of other auditor, he may consider it appropriate to discuss with the other auditor and the management of the component the audit findings or other matters affecting the financial information of the components. Where the principal auditor concludes that the financial information of a component is immaterial, the procedures outlined in SA600, which is using the work of another auditor, do not apply. Where several components immaterial in themselves and when are together material in relation to financial information of the entity as a whole, the procedures outlined in SA600 should be considered. For example, suppose the total turnover of the principal is 1,000 crore, and there is one component, its turnover is only 1 crore. So even parent is fulfilling the condition of 80% more than, because that 80% percentage has to be applied on consolidated turnover. So parent turnover itself is more than 80%. So that's why it is saying if it is immaterial, then these procedures will not apply. Obtain management representation, including those relating to consolidated financial statements or results. Evaluate and consider all reporting. But a second bullet is also important. It says when several components immaterial in themselves are together material in relation to financial information of the entity as a whole, the procedure outlined in SA600 should be considered. For example, the parent's turnover is 1,000 crore, and there are 250 components, all having 1 crore each turnover. So they are constituting more than 20%.
So then you have to follow, because you have to cross the threshold of 80%. तो उसका नहीं करेंगे तो 80% से ऊपर जाएंगे. But sir, फिर हम उसमें से selective ले सकते हैं, like you said 250 companies, तो उस threshold के ऊपर जाना. Obtain management representation, including those relating to consolidated financial statements. Evaluate and consider all reporting considerations, including those communicated by other auditors. And the parent company management is responsible to ensure that there is coordination between principal and other auditors. The key matters that may be included in the consolidated financial statements or results of audit or review instructions include a request that the other auditor, knowing the context in which the principal auditor will use the work of other auditor, confirms that other auditor will cooperate with principal auditor. इसके अंदर बोल रहा है कि अगर principal auditor other auditor से कोई information ले रहा है, other auditor knows कि वो किस purpose से ले रहा है, then the other auditor should cooperate with principal auditor. Dates of planned visits to the components. The principal auditor would inform to other auditor of matters such as areas requiring special consideration, which are high-risk areas, the threshold above which misstatements cannot be regarded as immaterial, a list of related parties prepared by parent company management, significant risk of material misstatements due to fraud or error, a description of accounting policies, a request that the other auditor communicates on timely basis any significant risk of material misstatements of the consolidated financial statements or results, the timetable for completing the audit or review, and the indicators of possible management bias in making accounting estimates at the component level. However, the list what we have read is not exhaustive, and the principal auditor may include from his side any points. Moving to section B, disclosure and other obligations of listed entities in relation to related party transactions. Listed entities to disclose related party transactions on half-yearly basis in Annexure 13 of this Master Circular. It has been decided to specify the information to be placed before the audit committee and the shareholders for consideration of related party transactions. So information which will be reviewed by audit committee for approval of related party transaction are tenure of the proposed transaction, value of the proposed transaction, name of the related party and its relationship with the entity or its subsidiary, including nature of its concern or interest, a copy of valuation or other external party report, if any such report has been relied upon, type, material terms and particulars of proposed transactions, justification as to why the related party transaction is in the interest of listed entity, percentage of counterparty's annual consolidated turnover that is represented by value of proposed related party transaction on a voluntary basis. That is the amount of related party percentage of related party transaction with respect to annual consolidated turnover of the counterpart. And same for the listed entity, the percentage of listed entities annual consolidated turnover for the immediately preceding financial year that is represented by value of the proposed transaction. The audit committee shall also review the status of long-term, that is for more than 1 year, or recurring related party transaction on annual basis. Further, an RPT for which the audit committee has granted omnibus approval shall continue to be placed before the shareholders if it is material. Then omnibus means a consolidated or standing approval in respect of transactions which are repetitive. Information to be provided to shareholders for consideration of related party transactions. The notice being sent to shareholders seeking approval for any proposed related party transaction shall include following information as a part of explanatory statement. A summary of information provided by the management of the listed entity to the audit committee. Justification for why the proposed transaction is in the interest of listed entity. Where the transaction relates to any loans, intercorporate deposits, advances or investments made or given by listed entity or its subsidiary, the details of the same. A statement that the valuation or other external report relied upon by the listed entity. Percentage of counterparties annual consolidated turnover that is represented by the value of proposed related party transaction on a voluntary basis, and any other information that may be relevant. The
explanatory statement contained in the notice sent to shareholders for seeking approval for and related party transaction shall provide relevant information so as to enable the shareholders to take a view where the terms and conditions of the proposed related party transactions are not unfavorable to the listed entity. Validity of omnibus approval for related party transactions granted by shareholders. So where omnibus approval is granted by shareholders in an AGM, then the approval shall stand valid till the next AGM, and where the approval is granted by shareholders in general meeting, then the approval shall stand valid for a period of 1 year. Section C of Chapter 3 requires statement of deviation or variation for proceeds of public issue, right issue, preferential issue, qualified institutions placement, etc. A listed entity is required to submit to the stock exchange a statement of deviation or variation pursuant to review by the audit committee on quarterly basis for a public issue, right issue, preferential issue, etc. indicating deviation जो कि use हुए proceeds from public issue, right issue, preferential issue, and qualified institutions placement, and the category-wise variations between projected utilization of funds and actual utilization of funds. Such statement of deviation or variation is to be submitted till the issue of proceeds is utilized or the reason for which such funds are raised have been achieved. A format for the same is prescribed in Annexure 14. Applicability: the format shall be applicable for funds raised by listed entities through public issue, right issue, preferential issue, or QIP. The disclosure to the stock exchange shall be made by listed entities on quarterly basis along with declaration of financial results. The statement of deviation report shall be placed before audit committee of the listed entity for review of quarterly basis, and after such review, the comments of audit committee along with the report shall be disclosed or submitted to the stock exchange. A nil report shall be submitted by listed entity where no deviation or variation is noticed. So thank you from my side, and now I'd like to call Mehul Gora for taking over the presentation. किसके डेविएशन की बात हो रही थी? किस चीज के डेविएशन की बात हो रही थी? ये बोले जा रही है और पूरा जो लोग है ना वो क्या सुन रहे हैं उनको पता ही नहीं है। कौन बताएगा क्या किस चीज के डेविएशन की बात हो रही है? तो एक्चुअली यू आर नॉट लिसनिंग, क्योंकि आपका बताओ मुझे कोई ये क्या बात कर रही थी? 100% none of you is listening. Deviation of mistake क्या भाई? ये आपका presence of mind है, that you are not listening what she is saying. क्या देखो इतने जनों में एक भी जना नहीं है, ये बोले जा रही है और आप सुन ही नहीं रहे हो, ऐसा क्यों? जबकि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रही है कि सब जो प्रोसीड्स इन्होंने लिए हैं उसके डेविएशन हमें रिपोर्टिंग करनी है, इतनी तो बात है। और क्या उर्दू में बोल रही थी है? आईटी प्रेजेंस नहीं है, दैट इज आवर प्रॉब्लम कि आज मुझे जबरदस्ती बिठा दिया यहाँ पे, दैट इज आवर प्रॉब्लम। तो वी नीड टू कुछ बोल ही नहीं रहे, ऐसा कुछ नया बोल रही है या कोई ऐसी लैंग्वेज बोल रही है, फ्रेंच में बोल रही है, जर्मन में बोल रही है, कैसे बोल रही है? तो वेयर वी आर वी नीड टू थिंक ऑफ कि हमको यहाँ जबरदस्ती बिठा दिया तो यार ये क्या हो गया आज, तो मतलब सर ने पता ही नहीं क्या कर दिया। तो शुड वी बिहेव लाइक दिस? क्या भाई तेरा है प्रेजेंस ऑफ माइंड? नहीं है। एंड सरप्राइजिंगली नन ऑफ यू हैव योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये क्या बात है? क्या हो गया तेरे को यहाँ से जाने के बाद? इतनी बार तक तो जब भी आ रहा था तो सारे क्विज बिल्कुल सही से अटेंड कर रहा था, 4 महीने 6 महीने बाहर क्या चला गया कि तेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड ही खत्म हो गया?
Is it where we are working? आप खुद सोचो ना, क्या भाई तेरा क्या हुआ? तेरे को भी काफी टाइम हो गया ना यहाँ आए हुए, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ही खत्म हो गया अपना। ये टेस्ट है आप लोगों को। बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें वो बता रहे हैं, हम उसको समझ ही नहीं रहे। तो बी वेरी केयरफुल। ये जिस तरीके से बता रहे हैं, आई थिंक शी वाज एब्सोल्युटली टेलिंग एवरीथिंग राइट। मुझे तो कोई ऐसा लगा नहीं कि यार उसने नहीं बताया। एंड आई नेवर रीड दिस डिस्क्लोजर्स। उसके बाद भी मुझे तो समझ में आ रहा था क्या है। और एंटायर पर्पज है, क्या पर्पज है? क्यों लिस्टेड कंपनीज को कहते हैं कि यार पूरे साल भर का वेट क्यों नहीं करते हैं? फाइनेंशियल रिजल्ट ही तो देने, साल भर वेट कर लो। Why don't they wait for the entire year? क्यों बार बार ये डिस्क्लोजर स्ट्रिंजेंट आ रहे हैं कि नहीं साहब कुछ मेटेरियल इवेंट तो जो है ना वो तो आज ही डिस्क्लोज करो, 15 मिनट में करो, 30 मिनट में करो। ऐसा क्यों? क्योंकि these are such an information, stockholders cannot wait for 1 year, cannot wait for 3 months. इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, इतनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है कि मटेरियल है तो फिर आपको उसको इमीडिएट इन्फॉर्म करना है टू द स्टॉक मार्केट। तो ये द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर लर्निंग, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो ये कब से डे बाय डे इट इज गेटिंग इम्प्रूव्ड। 92 में एक हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, आप लोगों ने एक वो अभी ओटीटी पे मूवी देखी होगी, है ना, स्कैम 1992। उस जमाने में कुछ होता ही नहीं था, बहुत लिमिटेड चीजें होती थी। एंड दैट टाइम जब इन्फोसिस ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए एक बार, तो उन्होंने ये कहा कि साहब हमने एक मिस्टेक करी है कि वी हैव इन्वेस्टेड द सरप्लस फंड इनटू द सेकेंडरी मार्केट। जबकि सेबी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी कि आपको इस तरीके के डिस्क्लोजर देने हैं। देयर वाज नो रिक्वायरमेंट, बट एज ए गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि उन्होंने ये सोचा फाउंडर नारायण मूर्ति ने कि यार हमने ये काम तो गलत कर दिया है ना, बिकॉज दे इनकर्ड सर्टेन लॉसेस बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू सच सेकेंडरी मार्केट। तो कहा कि यार इसकी भले ही वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है सेबी एलओडीआर में, सेबी की रिक्वायरमेंट नहीं है for disclosures, but still we should give these disclosures so that stakeholders can know। और उन्होंने कहा कि साहब ये डिसीजन हमारा गलत हो गया है, ऐसा भी लिखा उन्होंने। तो ये सारा मुद्दा जो है ना वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है, वो स्टॉक होल्डर्स के लिए इंफॉर्मेशन का है। वो केवल अपन यहाँ से ये सीखें कि कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कैसा किस तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसमें आनी चाहिए, है ना, क्या ऑडिटर लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, ये तो ठीक है, ये टेक्निकल बात है। लेकिन रेलेवेंस क्या है? स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, दैट इज द रेलेवेंस। तो वो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से यू कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को, नॉट ओनली दिस, जब भी अपन किसी चीज को सीखें समझें, केवल इस आइडिया से नहीं सीखें, केवल इस आइडिया से नहीं समझें कि यार मैं कैसे पास हो रहा हूं, है ना, या मैं क्या लर्न कर रहा हूं। You need to see from the others point of view कि इसको मैं लर्न करके जब मैं अपने उपयोग में लेके आऊंगा तो उसकी वजह से दूसरों के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, बोला ना उन्होंने कि मेंबर ऑफ सीए ने अगर साइन किया तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट विच हैज बीन इम्पोज्ड। तो वो तो आप सोच ही नहीं रहे। आप क्या सोच रहे हो, एग्जाम्स कैसे क्लियर करेंगे? यही सोच रहे हो क्या? यही सोच रहा है? यही सोच रहे हो? सुन ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे टॉपिक में नहीं है सेबी एलओडीआर। तो आज तो मेरे कान में रुई डाल गया। दैट इज हाउ यू आर बिहेविंग। आप खुद इवॉल्व करो ना, सब ऐसा ही बिहेव करो। मैं बता दूं कुछ, कोई बता दे कि साहब मैंने पूरा सुन लिया, इसको अच्छे से सुना। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको लगे तो आप इसको वापस सुनिए जाके, बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग इट। किसी ने सुना किसी को वापस जाके कि नहीं यार आज हमने यहाँ अटेंड कर लिया, कोई वो चीज अच्छी बताई जिसको वापस सुनते हैं?
पूरा available है record पे. So anyways, we have the another speaker with us. So thank you, Archie. I'm Nehal Vora and I'm going to continue the presentation. Continuing the presentation with chapter number 4, annual disclosures. Chapter 4, Part A, Annual Secretarial Audit Report. Regulation 24A1 of the LODR regulations requires every listed entity and its material unlisted subsidiaries incorporated in India to undertake a secretarial audit on a yearly basis. It should be completed within 60 days from the end of each financial year. Audit report should be as per Section 206 of Companies Act 2013. Section 206. Section 206 is power of registrar to call upon of any information or inquiry which call of any information. It should be conducted by a practicing chartered secretary, and he shall be guided by ICSIR. Then chapter 4, part B, business responsibility and sustainability reporting by listed entities. Regulation 34(2) of LODR regulation requires top 1,000 listed entities based on market capitalization have to submit a BRSR as specified by the board. BRSR seeks disclosure from listed entities on their performance against the 9 principles of the National Guidelines on Responsible Business Conduct. Reporting principle is divided into essential and leadership indicators. The essential indicators to be disclosed on mandatory basis and leadership indicator on voluntary basis. The BRSR is intended towards having quantitative and standardized disclosures on ESG parameters to enable comparability across company sectors. Such disclosures will be helpful for investors to make better investment decisions. Now, chapter 5, event-based disclosures. Chapter 5, part B, disclosure of material events information by listed entities. Regulation 30 of LODR regulation required listed entities to disclose adequate and accurate disclosure of information on ongoing basis is essentials on essential basis. The LODR regulation divides the event that needs to be disclosed broadly in 2 categories. Para A of Part A of Schedule 3 should be always disclosed, and Para B of Part A of Schedule 3 only when it crosses materiality. You can see the formats. Paras can. Schedule 3 के Part A के पैराज हैं. एनेक्चर में लगाया ना तुमने? एनेक्चर का मैं दिखाया. क्लिक करने पे नहीं खुलता है? वो एक्चुअली लिंक वो मेरी उसमें लगा हुआ है. मतलब मेरे लैपटॉप में है. पहले तैयारी करनी है. 18. पहले भी आंसर बेटर है. तो मैं अभी पीपीटी शेयर कर रखी हूँ. स्क्रीन शेयर कर दो. स्टॉप शेयर की स्क्रीन शेयर. This is part of Schedule 3 is any information related to this
it should be mandatorily disclosed by the listed entities, acquisitions, amalgamations, mergers, demergers. धीरे धीरे ऐसे एक चीज बता, तेरा काम क्या है कि मैं ये पढ़ दूं फटाफट और चले गए, तो तूने क्या बोला? तू एक बार अपने बैग में जा, फटाफट वापस बता। तूने अभी फर्स्ट क्या था? एनुअल डिस्क्लोजर। नहीं, अभी तो ये जो एनेजर 18 था ना, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? फिर ये अगर इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैंडेटरी डिस्क्लोज होनी चाहिए। हाँ, ये है क्या मतलब? ऐसा क्या हुआ? इवेंट्स बेस्ड। हाँ, फिर इवेंट तो ये इवेंट्स तू बता रहा है कि ये इवेंट्स अगर होती हैं तो आपको डिस्क्लोज करना है। कब करना है? फिर आज इवेंट हुई, कल करना है। फिर वो आगे आ रहा है तो इवेंट्स तो बता कौन कौन। हाँ, फिर मैं उनको बता रहा हूँ। तो कैसे होता है? एक्विजिशन नेक्स्ट पढ़ लूँ मैं फटाफट, कोई देख ना ले। फर्स्ट एक्विजिशन इसमें तो देख, हम डिटेल में तो नहीं डिस्कस करें, करा है तुम्हें आगे? नहीं सर, क्योंकि सर आगे और भी कंटेंट करने वाला कितनी स्लाइड्स? है। अभी 20-25 है तेरी हाँ, मतलब सर बीच में ब्रेक आएगा, ये बोलेगा, फिर मैं वापस बोलूंगा। दोनों के मिला के 20-25। नहीं ये फर्स्ट है? नहीं, अच्छा तू फास्ट ही कर। करो करो, शांति रहे। हो गया? फर्स्ट एक्विजिशन, then second amalgamation or merger, demerger, sale, disposal, other restructuring, issue अगर शेयर्स के वगैरह कुछ हुआ है, सिक्योरिटी, consolidation, buybacks, revision in ratings, अगर स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ रेटिंग्स वगैरह चेंज किए तो वो, आउटकम्स ऑफ मीटिंग्स, ऐसा हो गया। 7 चेंज इन ऑफिसर, अपॉइंटमेंट, corporate debt restructuring, share transfer agents, one time settlement, बाकी और भी है। तो आप चल ठीक है, रहने दे। अरे फर्स्ट पेज पे आएगी कर दे ऐसा। Then Chapter 5, Part B, disclosure by listed entities of defaults on payments of interest and repayment of principal. If the listed entity defaults on any payments of interest or repayment of principal relating to non-convertible debentures, non-convertible redeemable preference shares, etc., it should be disclosed. Shall be disclosed from within 24 hours from the 30th day of such default. Applicability of listed entities as told by Harshri. Disclosures अपने इसके ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, हंसो मत, थोड़ा सा अपना बनाए रखो। ये खत्म हो गई क्या स्लाइड? नहीं सर, ये वाली तो हो गई। नेक्स्ट ये फिर डिस्क्लोजर पे बता। हाँ, जैसे अपने ऐसे जो कंपनीज को देने होते हैं अपने, जैसे इनके कोई डिफॉल्ट वगैरह हुए तो लिस्टेड एंटिटी ऑब्लिगेशन वगैरह से अपने को कंपनीज को बताना पड़ेगा। In Chapter 5, Part C, disclosures of divergence in the asset classification and provisioning by banks. SEBI, after discussion with RBI, has directed listed banks to make disclosures of divergence in asset classification and provisioning within 24 hours of receipt of Reserve Bank final risk assessment report. These disclosures are in necessitate of immediate disclosure. It is according to RBI disclosures, divergence in asset classification and provisioning dated October 11, 2022.
The conditions are listed below. Additional provisioning for non-performing assets assessed by RBI exceeds the 5% of reported profits. जो profits है अपने before provision और contingency अपने banks के उसको 5% इनको NPAs के लिए रखना पड़ेगा. और second है कि जो gross NPAs है before deducting provision उसका 5% भी इनको additional disclose करना पड़ेगा. सिर्फ जो अपने बैंक्स हैं उनको दो बेसिस पे डिस्क्लोज करना पड़ता है. अपने आरबीआई डिस्क्लोजर जो ये जो नया सर्कुलर आया है 11 अक्टूबर 2022 को, उससे पहला पॉइंट ये कहता है कि जो अपना जो प्रॉफिट है बिफोर प्रोविजन और कॉन्टीजेंसी उसका 5% डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो वो अमाउंट आ रहा है वो. और सेकंड है कि जो एडिशनल प्रोविजनिंग है अगर एक्सीड कर रही है 5% से ज्यादा तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो कह रहा प्रोविजन करना पड़ेगा. हाँ और सेकंड भी ये है एडिशनल ग्रॉस एनपी अगर आइडेंटिफाइड हो गए एक्सीड 5%. ऐसे घबरा आराम से तो पढ़ के है. ये कोई नहीं पढ़ के है. इनको ना पढ़ने से मतलब है. अपन दोनों पढ़ रहे हैं. चल हाँ एडिशनल ग्रॉस एनपीएस आइडेंटिफाइड बाय एक्सीड 5% अगर हो गया. ग्रॉस एनपीएस होते हैं बिफोर डिडक्टिंग अपने प्रोविजन. Then chapter 5 part D, resignation of statutory auditors from listed entities. If the statutory auditor resigns, the listed entities shall disclose immediately on its websites. LODR regulation requires detailed reasons to be disclosed to the stock exchange in case of resignation of the auditor. तीन अपने वो हैं अलग-अलग. If the auditor resigns within 45 days from the end of quarter, अगर क्वार्टर खत्म हुआ और उसके 45 डेज अभी नहीं हुए तो अपने को सिर्फ जो ऑडिटर था उसको उस क्वार्टर की रिपोर्ट देनी है. यार ये उसकी तो जा रहा है. क्या तू दोबारा चलता है? नहीं सर मैंने नहीं बताया. टाइमिंग आप चला. अब सर अगर ये 45 डेज खत्म हो गया क्वार्टर हुए तो सर उसको नेक्स्ट क्वार्टर की भी देनी पड़ेगी अपने को. और मतलब जो प्रीवियस क्वार्टर है उसकी भी देनी पड़ेगी. दोनों की देनी पड़ेगी. और अगर उसने पहले के 3 क्वार्टर की ऑलरेडी दे दी तो उसको 4th क्वार्टर की भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी फिर ही वो रिजाइन कर सकता है. ऐसे LODR रेगुलेशन की वो. फिर अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है तो ऑडिटर शैल अप्रोच द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी. इफ द ऑडिटर proposes to resign, all concerned respect to the proposed resignation relevant document shall be brought to the notice of audit committee. फिर अपॉन ये अपना अगर ये इसमें सेक्शन 141 लग गया अपना डिस्क्वालिफिकेशन का तो फिर ये जितने हैं ना ये सारे पॉइंट फिर मतलब अप्लाई नहीं करेंगे अपन ये. और इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. He resign. If the auditor resigns, he has to disclose such. Does it mean? बस इतना ही है. इसमें एक लाइन इम्पोर्टेंट है. उसमें डिटेल्ड रीजन मांगा है रेजिग्नेशन का. तो फॉर्मेट पे कहीं नहीं लगा. तो उसी में तो लिखा है लाला 4th नंबर. हाँ डिटेल्ड रीजन फॉर रेजिग्नेशन. हाँ सर वो तो मैंने बताया. चला आगे चला. ये चैप्टर This is chapter 5. Now, location will continue. Hello everyone, myself Lokesh Michandani and I will be continuing this presentation. And the two topics that I have covered is other obligation and disclosure requirement as per chapter 6 and penal actions for non-compliance as per chapter 7. Other obligations में मैंने क्या करेगा effect. तो ये मेरा मेन टॉपिक है अदर ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो कि मैंने बताया चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग है. इसमें मेरे 6 सब टॉपिक्स है. पहला मैनर ऑफ अचीविंग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो और ये सारे सब टॉपिक अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे. दूसरा है फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ वोटिंग रिजल्ट. तीसरा है ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय लिस्टेड एंटिटीज. चौथा है SOPs फॉर डिस्प्यूट बिटवीन अ लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स.
एंड फिफ्थ है ग्रीवेंस रिजोल्यूशन बिटवीन लिस्टेड एंटिटीज एंड प्रॉक्सी एडवाइजर, और सिक्स टॉपिक है मेरा LODR रेगुलेशंस टू बाय बैक और डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। ये सारे टॉपिक सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मेरा पहला सब टॉपिक है मैनर ऑफ अचीविंग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। अब जैसे हम जानते हैं कि लिस्टेड एंटिटी को कुछ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रखनी पड़ती है जो कि है 25%। पर अगर सपोज कर लिए कि 25% से कम हो जाती है तो सेबी ने कुछ मेथड बता रखे हैं जिससे कि वो अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग को मिनिमम को अचीव कर सकती है। तो अब इसके लिए पहले तो मेथड्स बताए हैं और फिर उसके बाद कोई अगर सेबी के थ्रू स्पेसिफिक कंडीशंस भी है तो वो भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये स्पेसिफिक कंडीशंस तब लगेगी जब कंपनीज एक्ट की जो वो है रिक्वायरमेंट उसके एक्स्ट्रा में बता रखी है कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगेगी क्या। तो इसमें पहला मेथड है इशुएंस ऑफ शेयर्स टू पब्लिक, जो हम डायरेक्टली न्यू शेयर्स इशू करते हैं पब्लिक को। सेकंड है ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स, इसमें जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है एग्जिस्टिंग शेयर्स है वो शेयर होल्डर्स अपने मार्केट में बेचते हैं, तो अगर वो पब्लिक को बेचेंगे तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ेगी। अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, इसमें स्पेसिफिक कुछ इंस्टीट्यूशन को हम शेयर्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो सेबी ने इस पे कोई भी कंडीशंस एप्लीकेबल करी है। फोर्थ है राइट इशू या बोनस इशू। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम राइट इशू और बोनस इशू करेंगे तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होंगे जो कि प्रमोटर्स और पब्लिक हो सकती है तो दोनों को सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होगा। तो इस पे फिर सेबी ने अपनी स्पेसिफिक कंडीशन लगाई कि प्रमोटर्स को फॉलो करना पड़ेगा देयर एंटाइटलमेंट इन इक्विटी शेयर। फिफ्थ है हमारा इसॉप्स, तो हम इसॉप इशू कर सकते हैं, लेकिन सेबी ने इसका मेथड में ये बताया है कि वो सिर्फ मैक्सिमम 2% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ लिस्टेड एंटिटी इशू कर सकते हैं। अभी थोड़ा एफ है ये सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर इन द ओपन मार्केट। प्रमोटर्स अपने जो शेयर्स हैं वो ओपन मार्केट में इजीली सेल कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे जैसे इस मेथड में बता रखा है दो मेथड है। तो पहला मेथड है कि प्रमोटर्स अपने शेयर सेल कर सकते हैं जो कि मैक्सिमम 2% होगा टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ लिस्टेड एंटिटी। पर यहाँ पे अपन देखेंगे कि दूसरे मेथड में प्रमोटर्स का बता रखा है कि सेल अप टू मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ पेड अप कैपिटल इक्विटी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अप टू दोनों कंडीशन बता रखी है कि मैक्सिमम उधर 2% और मैक्सिमम उधर 5%। तो सेकंड कंडीशन में आप जैसे देखेंगे कि उन्होंने बता रखा है कि 5% वो तभी सेल कर सकते हैं कि अगर उसका रिजल्ट आफ्टर सच सेल इन ओपन मार्केट अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% हो जाए जो कि मिनिमम है। इस पे स्पेसिफिक कंडीशंस लगा रखी है सेबी ने अपनी लिस्टेड एंटिटीज पे जो कि पहले कि मतलब उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेबी को। पहला है द इंटेंशन ऑफ द प्रमोटर कि प्रमोटर का इंटेंशन क्या है इन शेयर्स को सेल करने का, डिटेल्स ऑफ द प्रमोटर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एंड परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग और द पीरियड with which the entire divestment process will be completed। और इसी के साथ एक एड ऑन सिचुएशन लगाई है कि सिचुएशन क्या कंडीशन लगवाई है कि लिस्टेड एंटिटी को एक अंडरटेकिंग पास साइन करके देनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को कि जो पर्सन है जो कि बिलोंग करते प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप वो वही शेयर्स ओपन मार्केट में उसी दिन ना खरीदें, तो जिससे कि पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़े ना कि प्रमोटर की कोई शेयर होल्डिंग बढ़े। लास्ट है इसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर, जो प्रमोटर्स के शेयर्स हैं वो अपने वो ETF फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि एक सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड है म्यूचुअल फंड है ये। तो इसमें भी इन्होंने मेथड में बता रखा है कि वो मैक्सिमम 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल इक्विटी शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस पे भी कंडीशन यही सेम लगाई है। द इंटेंशन ऑफ द प्रमोटर क्या है, द डिटेल्स ऑफ द प्रमोटर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और एक एक्स्ट्रा कंडीशन है डिटेल्स ऑफ द ETF टू व्हिच शेयर्स आर प्रपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड। अब ये बी टॉपिक है मेरा मेन सब टॉपिक फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ वोटिंग रिजल्ट। जैसे कंपनीज में एजीएम होती है तो सेबी ने गाइड करा है लिस्टेड एंटिटी को कि वो इस फॉर्मेट में डिस्क्लोज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं एनेक्स 22 है तो सबसे पहले दे रखा है डेट ऑफ एजीएम या टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन रिकॉर्ड डेट और नंबर ऑफ शेयर होल्डर प्रेजेंट इन द मीटिंग आइदर इन पर्सन और थ्रू प्रॉक्सी। इसमें दो कैटेगरीज है कि प्रमोटर्स कितना है और पब्लिक का कितना है, या फिर नंबर ऑफ शेयर अटेंड इन द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल हम जानते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नॉर्मल हो गई है और ई वोटिंग भी होती है तो इसके अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन अगर एजीएम के अलावा कोई एजेंडा पर्पज के लिए ना मीटिंग होती है कंपनी में तो वो फिर ये फॉर्मेट होगा इसके लिए जिसमें आप देख सकते हैं रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड कि ऑर्डिनरी है कि स्पेशल रिजोल्यूशन है, ये 75% वाला होता है स्पेशल रिजोल्यूशन, और वेदर प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप आर इंटरेस्टेड इन द एजेंडा, क्या वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। कैटेगरी फिर बता रखी कि प्रमोटर कितना है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन कितने, पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशन, पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशन हर्षदीप ने बताया था जैसे। और फिर मोड ऑफ वोटिंग बता सकते हैं अपन कि वोटिंग क्या हुई है, कितनी हुई है, या फिर पोल हुआ या फिर पोस्टल बैलेट हुआ है। पोस्टल बैलेट पुराने समय में चलता था इसलिए वो उससे बता रखा है कि
मेरा थर्ड सब मेन टॉपिक है ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय लिस्टेड एंटिटीज। तो रेगुलेशन 44 ऑफ क्लॉज 1 ऑफ LODR रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है कि लिस्टेड एंटिटीज को ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी शेयर होल्डर्स को। तो अगर एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है वोटिंग प्रोसेस में तो दो मेथड्स हैं, एक तो ESPs होते हैं, ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर, और कुछ सेबी के थ्रू 3 स्टेजेस हैं वो बता रखी, जैसे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन विद डिपॉजिटरीज जिसमें वो मोबाइल नंबर देते हैं अपना और OTP के थ्रू वेरिफिकेशन आता है और उससे फिर वो ई वोटिंग प्रोसेस पे जाते हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वो एक वेबसाइट की लिंक भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर एनी SMS कोई के थ्रू, जिससे कि वो ई वोटिंग की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और थ्रू डीमेट अकाउंट्स भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो भी जिसके पास भी डीमेट अकाउंट होगा वो डीमेट अकाउंट को यूज करके ई वोटिंग कर सकता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उनको प्रोवाइड करवा देंगे। अभी कुछ कंडीशंस है जो कि बताइए, एक तो लिस्टेड एंटिटीज के लिए, डिपॉजिटरी के लिए कि लिस्टेड एंटिटी अब जो भी उनकी अपकमिंग AGM होगी या EGM होगी उनकी उसको डिटेल्स देनी पड़ेगी डिपॉजिटरी को, और डिपॉजिटरी SMS या अलर्ट के थ्रू SMS या ईमेल अलर्ट के थ्रू अपने डीमेट अकाउंट होल्डर्स को पहुंचा देंगे एटलीस्ट टू प्रायर डेज। तो और फोर्थ पॉइंट है इसमें कि डिपॉजिटरी अपने डीमेट अकाउंट होल्डर्स को बोल सकते हैं कि अपनी ईमेल आईडी को अपग्रेड कर दीजिए, मोबाइल नंबर को अपग्रेड कर दीजिए, जिससे कि वो ये वोटिंग में थोड़ा एफिशिएंसी से पार्टिसिपेट कर सकें। डिपॉजिटरी एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल डिफिकल्टीज अगर कोई शेड्यूल्स की फेस हो रही है तो वो सॉल्व हो जाए। और फिर लिस्टेड एंटिटीज को ये चीज ई वोटिंग प्रोसेस की नोटिफाई करनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स को थ्रू सेंडिंग अ नोटिस। और ये सारी अबव फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करवाई जाएंगी जिन शेयर होल्डर्स के पास डीमेट अकाउंट में सिक्योरिटीज हैं। और ESP का सेम प्रोसेस है कि कंटिन्यू कर सकते हैं, वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं फिजिकल शेयर होल्डर्स को भी और शेयर होल्डर्स अदर देन इंडिविजुअल्स। और ये सारी जो एक पॉइंट में ये बता रखा है कि जो सारी ये ऊपर फैसिलिटी वो एना रिक्वायरमेंट्स है वो कंपनीज एक्ट की रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल है और ये कोई एक्स्ट्रा कंडीशन जो एप्लीकेबल है। ये टॉपिक है इसमें SOPs फॉर डिस्प्यूट बिटवीन अ लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स शेयर होल्डर इन्वेस्टर। तो रेगुलेशन 40 ऑफ द LODR रेगुलेशंस ये बोलता है कि कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहा कोई लिस्टेड एंटिटी और शेयर होल्डर इन्वेस्टर के बीच में, तो उनके रिगार्डिंग उनको स्टॉक एक्सचेंज को एडवाइस करा गया कि वो SOPs प्लेस करें। जैसे कि मान लो डिस्प्यूट है अपना ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, डीमेट या डीमेट, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट शेयर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ होल्डर, तो इन सब के रिगार्डिंग SOPs प्रोवाइड करें अपनी वेबसाइट्स पे। तो NSE और BSE में अपनी अपनी रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे ये सारी SOPs प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर ई पॉइंट है इसमें ग्रीवेंस रिजोल्यूशन बिटवीन लिस्टेड एंटिटी एंड प्रॉक्सी एडवाइजर्स। अब इधर देखेंगे लिस्टेड एंटिटीज पता है, लेकिन प्रॉक्सी एडवाइजर्स क्या होता है? प्रॉक्सी एडवाइजर्स वो फर्म है जो कि अपने लिस्टेड एंटिटी के शेयर होल्डर्स को एडवाइस करती है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ देयर वोटिंग और पूरा पर्पस बताती है मीटिंग का। तो प्रॉक्सी एडवाइजर्स वो होते हैं, जैसे लिखा रहेगा प्रॉक्सी एडवाइजर्स प्रोवाइड एडवाइस टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और शेयर होल्डर ऑफ लिस्टेड एंटिटी इन रिलेशन टू एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट्स इन द कंपनी इंक्लूडिंग वोटिंग रिकमेंडेशन ऑन एजेंडा आइटम्स। प्रॉक्सी एडवाइजर्स ने की रोल प्ले करा है जो शेयर होल्डर्स को इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करने को बोलता है। और पर इसमें क्या होता है कि प्रॉक्सी एडवाइजर्स की कुछ अलग सोच हो सकती है और लिस्टेड एंटिटी की कुछ अलग सोच हो सकती है, तो ये एक इनहेरेंट नेचर है। तो ये डिस्प्यूट क्रिएट करता है बिटवीन लिस्टेड एंटिटी एंड प्रॉक्सी एडवाइजर्स। तो इसमें मेथड ये है कि लिस्टेड एंटिटीज अब क्या करें, क्योंकि उनकी मीटिंग है और उनको वोट्स आपको पता ही है कितना जरूरी होते हैं। तो लिस्टेड एंटिटी में अप्रोच SEBI and SEBI will examine the matter of non-compliance by the proxy advisor according to Code of Conduct under Regulation 24 Clause 2 with Regulation 23 Clause 1 of SEBI Research and Analysis Regulation 2014। इसमें लास्ट टॉपिक इसका ये वाला है कि LODR regulations to buyback और delisting of securities of listed entities। एक्चुअली ये कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है कि अगर जो भी सिक्योरिटीज का ट्रांसमिशन है या ट्रांसपोर्टेशन है वो डीमेटलाइज में अफेक्टेड होगा, तो अगर शेयर्स को बायबैक या डीलिस्ट करना है तो वो भी एक तरीके से ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी फिर डीमेटलाइज फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन शेयर्स तो फिजिकल मतलब लोगों के पास फिजिकल में भी है कुछ शेयर्स, तो इस पे सेबी ने अपना क्लेरिफाई करा है कि जो जिनके पास भी फिजिकल शेयर्स है दे आर अलाउड टू टेंडर इन बायबैक्स थ्रू टेंडर ऑफर रूट एंड एग्जिट ऑफर इन केस ऑफ वॉलंटरी और कंपल्सरी डीलिस्टिंग। तो एज पर ये जो भी टेंडरिंग होगी वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ रेस्पेक्टिव रेगुलेशंस होगी। अब ये मेरा चैप्टर 7 आता है पीनल एक्शंस फॉर नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ द LODR रेगुलेशंस। इसमें बता रखा है कि जो भी एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा अगर किसी भी लिस्टेड एंटिटी ने नॉन कंप्लायंस करी,
तो फर्स्ट रिजॉर्ट है कि भाई फ्रीजिंग ऑफ द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर्स ग्रुप, उनके शेयर सारे फ्रीज कर दिए जाएंगे तो वो ट्रेड के लिए अलाउ नहीं होंगे। और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को अपनी अपनी वेबसाइट्स पे इनकी डिटेल्स बतानी पड़ेगी कि कितने शेयर्स फ्रीज हुए, कि क्या अमाउंट ऑफ फाइन्स लीव हुआ, या फिर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, कितने पीरियड तक सस्पेंड रहा। और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कैन कीप इन अबियंस, मतलब वो अपना ये जो एक्शन है फ्रीज करने का और ये सारे फाइन्स वगैरह लेने का, ये होल्ड पे डाल सकते हैं अगर इनको कहीं से ऑर्डर आया, जैसे कि जहाँ लिखा हुआ है वेयर स्पेसिफिक एग्जेम्पशन अवेलेबल। फॉर एग्जांपल लॉ या ट्रिब्यूनल में उन्होंने बोला कि इस लिस्टेड एंटिटी को जो भी आप इस पे वो लगा रहे हो नॉन कंप्लायंस का ऑब्लिगेशन, तो आप इसको होल्ड पे डालिए। ये देख लिए आप नॉन कंप्लायंस बता रखी है कि कोई कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है और इनकी नॉन कंप्लायंस पे कितने कितने फाइन्स हैं। जैसे आप देखेंगे कि नीचे 5000 वाली में टू सबमिट फॉर द फाइनेंशियल रिजल्ट, जैसे अपने विकास सर ने डिस्कस करा था कि फाइनेंशियल रिजल्ट वेतन पीरियड डिस्कस करने पड़ते हैं वरना पेनल्टी लगेगी। और ये सारे टू अपॉइंट ऑफ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, टू अपॉइंट शेयर ट्रांसफर एजेंट, टू इंश्योर एक्सपीडियस रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट। इधर एक्सपीडियस रिड्रेसल का मतलब है कि इन्वेस्टर की कोई कंप्लेन आती है स्टॉक एक्सचेंज को, तो फिर वो कितना जल्दी उसको ठीक करते हैं और वो भी उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा फिर सेबी को। और नॉन कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट पर्टेनिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, constitution of audit committee, constitution of risk management committee, to submit the secretarial compliance report, to submit the corporate governance compliance report, इन सब पे पेनल्टीज लगी हुई है। अब जैसे मैंने बताया कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करना पड़ेगा कि इन्होंने नॉन कंप्लायंस क्या क्या करी है और उसके फाइन्स वगैरह, उनकी सारी डिटेल्स वगैरह। अब जो भी ये फाइन्स वगैरह आए हैं इनका यूज कहाँ होगा, इनको सबको क्रेडिट करा जाएगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में। और अपना रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वो कंप्लायंस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कंप्लायंस स्टेटस चेक करेगा लिस्टेड एंटिटी का, और फिर उनको 30 डेज के अंदर मतलब पूरा रिव्यू करेगा पहले तो कि कंप्लायंस करिए कि नहीं करिए, जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट होगी उनको, और फिर वो 30 डेज के अंदर नोटिस भेजेगा नॉन कंप्लायंट लिस्टेड एंटिटीज को। तो नॉन कंप्लायंस लिस्टेड एंटिटी को फिर अकॉर्डिंगली कंप्लायंस भी करना पड़ेगा और फाइन भी पे करना पड़ेगा एज पर दिस सेक्शन विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिस। और अगर फिर भी नॉन कंप्लायंट लिस्टेड एंटिटी फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट एंड आल्सो फेल्स टू पे द फाइन within the stipulated period, then stock exchange will again send a notice directly to the promoter of such non-compliant entities, who will ensure the compliance of the requirements and pay fines within 10 days from the date of such notice. और इसके आगे कोई भी सब्सिक्वेंट एक्शन लिया जाता है तो वो फिर डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आगे प्लेस होगा। अब ये एसओपीज आई है थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जैसे कि अगर लिस्टेड एंटिटी कोई भी नॉन कंप्लाइंट है कोई भी प्रोविजंस को एक्सेप्ट वो एमटीएस रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई थी, तो उसमें फिर पहली कंडीशन है कि भाई सबसे मतलब क्या करेगी अब स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहले लिस्टेड एंटिटी को जेड कैटेगरी में डालेगी। अभी जेड कैटेगरी होती क्या है ये मैं आपको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा, जहाँ पे और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रखा है कि जहाँ पे जो शेयर्स है वो ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पे होते हैं। तो ट्रेड फॉर ट्रेड स्टॉक्स होते क्या है जो कि एलिजिबल है सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में, सॉरी आर नॉट एलिजिबल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कि आज ही हमने सुबह परचेज करा और शाम को मार्केट पहले बंद होने से पहले अपन ने उसको सेल कर दिया, लेकिन अगर जेड कैटेगरी में चलेगी तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अगर लिस्टेड एंटिटी अगर ये नॉन कंप्लायंस को रेक्टिफाइज कर देती है तो फिर स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो जेड कैटेगरी में उसको नहीं डालेगा लिस्टेड एंटिटी को, बट जैसे कि उसने स्टॉक एक्सचेंज ने शेयर्स फ्रीज कर दिए थे वो विल रिमेन फ्रीज। ये कुछ क्राइटेरिया बता रखे हैं। अभी क्राइटेरिया फॉर सस्पेंशन ऑफ द ट्रेडिंग इन द शेयर्स, ये जेड कैटेगरी के बाद वाली कंडीशन है कि ट्रेडिंग के अंदर सस्पेंशन कब लग जाएगा, जैसे कि फेलियर टू अपॉइंट मूवमेंट डायरेक्टर फॉर 2 consecutive quarters, failure to constitute audit committee for 2 consecutive quarters, failure to submit corporate governance compliance report for 2 consecutive quarters, failure to submit shareholding pattern for 2 consecutive quarters, failure to submit financial result for 2 consecutive quarters, failure to submit annual report for 2 consecutive financial years, failure to submit information on the reconciliation of shares and capital audit report for 2 consecutive quarters, receipt of the notice of suspension of trading of that entity by any other stock recognized stock exchange। अब ये लास्ट वाले पॉइंट है, इसमें मेन थोड़ा मतलब मीनिंग ये है कि अगर एनएससी को बीएससी से इंफॉर्मेशन मिली कि भाई इन्होंने नॉन कंप्लायंस करी तो फिर बीएससी अप्लाई करेगी या फिर वाइस वर्सा हो जाएगा। तो इसमें 2 consecutive क्वार्टर्स आप देख रहे होंगे, 2 consecutive क्वार्टर्स का आप जैसे मतलब समझ सकते हैं कि रेगुलर 180 डेज ना कि 90 बार। अब ये बता रखा है कि एसओपी फॉर मूविंग द स्क्रिप्ट टू द जेड कैटेगरी में डालने के बाद जहाँ पे इंटरट्रेडिंग अलाउ नहीं है।
तो अगर कोई लिस्टेड एंटिटी डिफॉल्ट करती है कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ LODR रेगुलेशंस, तो उस पे फाइन तो लगेगा ही जो अपने ऊपर देखा, और साथ ही में लिस्टेड एंटिटी को Z कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. पर बिफोर मूविंग द लिस्टेड एंटिटी टू द Z कैटेगरी, द स्टॉक एक्सचेंज शेल सेंड रिटर्न इंटीमेशन टू द नॉन कंप्लाइंट लिस्टेड एंटिटी. उनको वो मौका देगी कि वो 7 डेज के अंदर वो कंप्लायंस कर ले, जिससे कि वो Z कैटेगरी के अंदर ना डाले. पर फिर भी अगर वो 7 डेज में नॉन कंप्लाइंट ही रहती है, मतलब कंप्लायंस नहीं करती रेगुलेशंस में, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज 10 डेज प्रायर नोटिस देगा पब्लिक को कि हम Z कैटेगरी में इस लिस्टेड एंटिटी को डालने वाले, क्योंकि इसमें पब्लिक को भी दिक्कत आएगी अगर वो इंटरडीलिंग नहीं कर पाएंगे तो किसी लिस्टेड एंटिटी को लेके. If the non-compliant listed entity complies with the respective requirements 2 working days before the proposed date of movement of the scrip to Z category, the scrip shall not be moved. अगर Z कैटेगरी से डालने से जो दिन है डाल लेगा, उससे एटलीस्ट 2 प्रायर डेज अगर वो कंप्लाई कर देगी तो फिर वो Z कैटेगरी में नहीं डालेगी. ये आ गया SOP फॉर सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग. इसमें however before suspending the trading of a scrip, the stock exchange shall send written intimation to the non-compliant listed calling upon it to comply with the respective requirements and pay the applicable fine within 21 days of the intimation. इसमें ये भी रखा है कि अगर सस्पेंशन फॉर ट्रेडिंग से पहले उनको 21 डेज का नोटिस दिया जाएगा कि तुम कंप्लाई कर लो, वरना फिर 21 डेज के बाद उनकी सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग हो जाएगी, जो कि Z कैटेगरी के बाद वाली कंडीशन है. The stock exchange shall also give a public notice. वो public notice भी देगी 30 days prior, क्योंकि जो कि possible suspension of trading in the shares of the non-compliant. If the non-compliant listed entities complies with the same condition है कि अगर वो non-compliant listed entity comply कर देती है 2 days prior, तो फिर उनकी suspension of trading बंद हो जाए, मतलब नहीं होगी. After 15 days of suspension, अब suspension of trading में होता क्या है, हम ना इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं ना कोई ट्रेडिंग कर सकते, लेकिन इसमें भी कंडीशन दी रहती है कि आफ्टर 15 डेज ऑफ सस्पेंशन, मतलब जिस दिन हमने सस्पेंशन कर दिया उसके बाद भी ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पे चल सकता है, पर ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ एवरी वीक फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन. मतलब डेट ऑफ सस्पेंशन जिस दिन लग गया उसके 6 मंथ्स तक वो अपन सिर्फ फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे पे इंटर ट्रेडिंग कर सकते हैं, सॉरी ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस कर सकते हैं. अब है कि SOP फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग. अब सस्पेंशन लग गया ट्रेडिंग पे तो उसको रिवोकेट भी करना पड़ेगा ना. तो अगर मान लो नॉन कंप्लाई लिस्टेड एंटिटी ने सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर लिया और ऑन द डेट ऑफ कंप्लायंस गिव अ पब्लिक नोटिस, देन द स्टॉक एक्सचेंज विल गिव अ पब्लिक नोटिस कि इन लिस्टेड एंटिटीज ने पहले नॉन कंप्लाई थी, जो कि डिटेल्स दी थी फाइन वगैरह की, अब वो डालेगी वेबसाइट पे कि इन्होंने कंप्लाई कर लिया, और फिर ये एक्शन को रिवोक कर देगी, मतलब रिवोकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग हो जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज from the date of such notice. और जब ये by issuing the said notice, the stock exchange shall send intimation of the notice to other stock exchange also, जैसे कि NSE BSE को देगी या BSE NSE को vice versa, where the shares of the entities are listed. After revocation of a suspension, अब जिस प्रोसेस से हम आए थे, पहले Z कैटेगरी में गया था, इंटरडे ट्रेडिंग अवेलेबल थी, और अब Z कैटेगरी से सस्पेंशन में गया जहाँ पे इंटरडे ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं है, तो उसी प्रोसेस में वापस रिवोकेट होगा. सबसे पहले उस 7 डेज के पीरियड में वापस वो Z कैटेगरी में आएगी जहाँ पे इंटर ट्रेडिंग अवेलेबल होगी, सॉरी ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस अवेलेबल होगा, और फिर वापस से वो नॉर्मल कैटेगरी में जाएगी. अब ये लास्ट मेरा टॉपिक है, नॉन कंप्लायंस विद द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट. इसमें वो सारी नॉन कंप्लायंस अपन ने देखी थी जिसपे फाइन्स वगैरह एप्लीकेबल थे. अपन ने बस एक भी देखी थी, सबसे पहला जो मैंने बताया था मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, जो अगर उसकी नॉन कंप्लायंस होती है तो उसके बारे में बता रखा है कि भाई द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल रिव्यू द कंप्लायंस ऑफ एमपीएस रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन द शेयर होल्डिंग पैटर्न, और जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवाते हैं ऑन अ क्वार्टरली बेसिस विथिन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. और अगर उनको नॉन कंप्लायंस मिली एमपीएस रिक्वायरमेंट के थ्रू तो स्टॉक एक्सचेंज नोटिस इशू करेगा कि इनको आना कंप्लाई करें. और उसके बाद भी अगर एंटिटीज लिस्टेड एंटिटीज नॉन कंप्लाइंट ही रहती है तो फिर उन पे वो फाइन इम्पोज करेगा 5000 पर डे अप टू द डेट व्हेन दे कंप्लाई द होल रिक्वायरमेंट. और recognized stock exchange shall also immediate the depositories to freeze the entire shareholding, जैसे हमने सबसे पहले देखा था, ये वापस रिपीट हुआ. और the promoters group, a union point है, the promoter group and the directors of the listed entity will not hold any new position as director in any other listed entity till the date of compliance by such entity. In case where the listed entity फिर भी नहीं मानती और नॉन कंप्लाइंट ही रहती है for a period of more than 1 year, तो recognized exchange उस दिन से इम्पोज करेगा और फाइन जो कि इंक्रीज हो जाएगा 10,000 पर डे ऑफ नॉन कंप्लायंस, एंड फाइन तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक लिस्टेड एंटिटी कंप्लाइंट नहीं करती थी. और अगर फिर भी वो कंप्लाइंट ही नहीं रहती तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आल्सो कंसीडर
कि वो कंपल्सरी डीलिस्टिंग कर दे ऑफ द नॉन कंप्लायंट एंटिटी, मतलब उस लिस्टेड एंटिटी को डीलिस्ट कर दे और वो फिर लिस्टेड एंटिटी नहीं रहेगी इन फ्यूचर। और ये जो भी ऊपर से अपन ने फाइन्स देखे हैं वो वापस से, मतलब जैसे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रिक्वायरमेंट अभी अपने 10,000 पर डे और 5,000 पर डे फाइन था, तो इन पे जो भी फाइन रिलाइज हुए ये सारे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में आएंगे और द कंसर्न रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और अगर मान लो कंपनी कंप्लाई कर लेती है वो, तो फिर वो सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा कि अनफ्रीज हो जाएगी सारी शेयर होल्डिंग और सारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट कर देगी कि अनफ्रीज कर दे और उनको ट्रेडिंग करने के लिए नॉर्मल कैटेगरी में डाल दे। थैंक यू एवरीवन। Now I'm back. Covering the last topic, guidance note on board evaluation. First, the board evaluation is a method for board to verify members are members are meeting expectations, making progress towards goals, following bylaws, and a chance to gather feedback. On the board side. Then I am covering 7 topics: background of board evaluation in India, subject and process of evaluation, feedback, action plan, disclosures, frequency of board evaluation, and responsibility and review. The first, background of board evaluation in India. First part, role of nomination and remuneration committee. जो अपनी कमिटीज है वो फॉर्म हुई होती है, उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस वगैरह को चेक करना होता है, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो रिव्यू करेंगे परफॉर्मेंस को नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के चेयरपर्सन के, और असेस करेंगे क्वालिटी, क्वांटिटी, timelines of flow of information between the company management and the board that is necessary for the board. The second, subject and process of evaluation. The process of evaluation is generally elaborate, stretching across pre-evaluation, evaluation and post-evaluation process include the following. ये 3 चीजों में अपना बटा हुआ है। अपना बोर्ड इवैल्यूएशन, गाइडेंस नोट, मतलब गाइडेंस नोट ऑन बोर्ड इवैल्यूएशन क्या होता है वैसे बोर्ड इवैल्यूएशन? जो बोर्ड की जो मीटिंग्स वगैरह और जो बोर्ड जो वर्किंग्स है वो पूरा कवर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, लिस्टेड एंटिटीज कौन करता है? ये बोर्ड खुद ही मतलब लोगों को अपॉइंट करता है, वो आगे आ रहे हैं। फर्स्ट, इसमें 3 पार्ट्स हैं: आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन, फिर क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, और मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। First, identifying the objectives of evaluation. This is the first and the crucial step in the board evaluation process. The objectives may be general objectives, standard objectives for all board evaluations of the entity, जो अपने normal objectives होते हैं वो, और specific objectives जो अपने कुछ event से related या new issue of concern से related होता है वो। In criteria of evaluation भी 3 parts में divided है: board as a whole, कमिटीज ऑफ बोर्ड, इंडिविजुअल डायरेक्टर। इन 3 पे अपन इवैल्यूएट करेंगे। फिर बोर्ड एज अ होल के भी 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड पे इवैल्यूएट करेंगे कि कॉम्पिटेंट है या नहीं डायरेक्टर्स जो अपने अपॉइंटेड है, फिर एक्सपीरियंस कैसे है उनके पास, क्वालिफिकेशंस है या नहीं सबके पास अलग अलग, फिर डाइवर्सिटी इन बोर्ड, जेंडर बैकग्राउंड, कॉम्पिटेंस, एक्सपीरियंस वगैरह एक्सेट्रा, और अपॉइंटमेंट इन द बोर्ड वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट है या नहीं जो जैसे अपॉइंट किया है। फिर मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, जो मीटिंग्स है बोर्ड की वो रेगुलर है या नहीं है, फ्रीक्वेंसी कितनी है उनकी, लॉजिस्टिक, वेन्यू, फॉर्मेट एक्सेट्रा, एजेंडा जो उनका जो वो है पर्पस है मीटिंग्स का वो प्रॉपर्ली रिव्यू वगैरह हो रहा है नहीं हो रहा, डिस्कशंस कैसे हो रहे हैं बोर्ड के बोर्ड और उनकी मीटिंग्स, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स, जो मिनट्स जो मतलब जो वहाँ पे जो मीटिंग्स में हुआ है वो पूरे उनके मिनट्स एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली अपने मेंटेन होनी चाहिए, और डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अपनी जो इंफॉर्मेशन मेंबर्स को जाएगी तो वो बिल्कुल एक्यूरेट, फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली जानी चाहिए। देन फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, तो इसमें रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड, स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क,
prevents redressal for investors, conflict of interest, stakeholder, value and responsibility, corporate culture, review of board evaluation और facilitation of independent directors. इन 10 पॉइंट्स पे अपन मतलब ये अपना क्राइटेरिया इवैल्यूएट करने का फंक्शन ऑफ द बोर्ड. Then fourth, board and management. तो अपना इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड फीडबैक, जो अपने को फीडबैक मिल रहा है मैनेजमेंट से उसका कैसा उसको कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं लोग. फिर इंडिपेंडेंस ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द बोर्ड, और दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं बोर्ड और मैनेजमेंट. सेक्रेटेरियल सपोर्ट, फंड अवेलेबिलिटी, सक्सेशन प्लान, प्रोफेशनल ये हो गया सक्सेशन प्लान. फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो अपने जो नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं उनको प्रॉपर अपन इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं नहीं दे रहे, और जो कंटिन्यू है उनको अपन मेंबर्स ऑफ और केयर अप टू डेट, मतलब वो अप टू डेट है. सेकंड, कमिटीज ऑफ द बोर्ड. तो अपनी बोर्ड की कमेटी है उसमें कंपोजिशन वगैरह सब मेंटेन वगैरह होना चाहिए. इफेक्टिवनेस ऑफ द कमिटी. इफेक्टिवनेस ऑफ द कमिटी है फुलफिल, वो इफेक्टिवनेस काम कर रही है नहीं कर रही. The structure of the committee and meetings has been structured properly and regular meetings are being held. फिर इंडिपेंडेंस कैसी कमेटी की और कंट्रीब्यूशन कैसा है बोर्ड का डिसीजन के उस पर. फिर इंडिविजुअल डायरेक्टर्स एंड चेयरपर्सन पे अपन ये अपना तीसरा क्राइटेरिया इवैल्यूएट करने का. तो उनकी क्वालिफिकेशंस कैसी, एक्सपीरियंस कैसा है, नॉलेज, कॉम्पिटेंसी, फुलफिलमेंट वो फंक्शंस पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, एबिलिटी टू फंक्शन एज अ टीम वर्क में काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, इनिशिएट कितना कर पा रहे हैं, अवेलेबिलिटी एंड अटेंडेंस, कमिट कितने हैं बोर्ड और उसके काम के लिए, कंट्रीब्यूशन कितना करते हैं, और इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट वगैरह कितना रहते हैं. देन मेथड ऑफ इवैल्यूएशन. तो अपना दो तरीके से इवैल्यूएट हो सकता है. फर्स्ट है इंटरनल असेसमेंट. तो इसमें दो तरीके हैं, डिटेल क्वेश्चन प्रिपेयर होता है और सर्कुलेट हो जाते हैं इंडिविजुअल डायरेक्टर्स और बोर्ड को. और दूसरा है ओरल असेसमेंट प्रोवाइडेड बाय द पर्सन ऑन इंटरव्यू. फिर इसका दूसरा मेथड है असेसमेंट बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट. इसमें बाहर से एक्सपर्ट्स आते हैं और फिर वो क्वेश्चनियर बना के इधर बाट इधर उधर मतलब डायरेक्टर्स वगैरह को दे देते हैं और फिर वो भर के देते हैं और फिर उसके बेसिस पे अपना इवैल्यूएट हो जाता है. और ये अपना कॉम्बिनेशन ऑफ ये अपन एक और एक इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 भी कर सकते हैं. फिर थर्ड पार्ट फीडबैक. अब अपन ने ये पूरा इवैल्यूएट कर लिया तो अपन फीडबैक देंगे डायरेक्टर्स वगैरह को. तो वो फीडबैक कैसे दे सकते हैं, ओरल दे सकते हैं और रिटर्न असेसमेंट की तरह भी दे सकते हैं टू एवरी मेंबर बोर्ड एंड कमेटी. फिर अब इस फीडबैक पे अपना एक्शन प्लान क्या होगा डायरेक्टर्स का. तो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट वो लिखेंगे, लिस्ट ऑफ एक्शंस बनाएंगे और रिव्यू ऑफ एक्शंस कर लेंगे. तो डिस्क्लोजर, अपने डिस्क्लोजर सारे कंप्लीट होने चाहिए LODR के, कंपनीज एक्ट के और एनुअल इवैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड वगैरह जो भी है अपने. और फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड इवैल्यूएशन ही जनरली तो वंस होता है, वंस अ ईयर. पर अगर कंपनी का और मतलब डिजायर करती है तो और करना चाहेगी तो कर ले. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिव्यू. अपना इसके लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल अपना चेयरपर्सन होता है बोर्ड इवैल्यूएशन करने के लिए. ये प्राइमरी रोल है उसका चेयरपर्सन का जो इवैल्यूएट करे, इसलिए अपन उसी को लायबल मानते हैं अगर कुछ गड़बड़ होने तो. और रिव्यू अपना स्टार्टिंग प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये अपने को पता ही है. तो इसमें अपन रिव्यू वगैरह कर लेंगे बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम मैनेजमेंट, बोर्ड मेंबर्स, चेयरपर्सन, एक्सटर्नल असेसमेंट. यहाँ पे मेरा लगभग खत्म हो गया. अब इसके बाद में कुछ अलग 2 मिनट अब मैं कुछ अलग बोलना चाहता हूँ. मतलब टॉपिक तो अपना नहीं कवर हो गया. तो सर आए जब बोलना वाला मैं बोल देता हूँ अलग. तूने जो बनाई ना स्लाइड पूरी उल्टी बना. पहले तेरे को बताना था कि इवैल्यूएशन क्यों होना चाहिए, कहाँ लिखा है. तूने बोला कि वन टाइम होना चाहिए, उसके अलावा जब चाहे करा सकते हो, है ना. कौन कर सकता है, कैसे होना चाहिए, फिर होगा क्या क्या. तूने स्टार्ट कर दिया क्या क्या होगा इसमें. क्या है ये पता नहीं, क्यों है ये पता नहीं, इसलिए ये पता. ये शुरू में बताया था तुमने. हाँ पहले मैं नहीं आया था तब बताया था बॉडी. नहीं सर, अभी जब आप मतलब किसी को नहीं पता. सर अभी बताया मैंने स्टार्ट में, तो बोर्ड इवैल्यूएशन स्टार्ट किया था. मैंने बताया कि ऐसे रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट तो सबसे लास्ट में डालो. सर वो तो इधर आए ना. तूने से स्टार्ट ही लास्ट पेज से किया होगा. चल ठीक हो गया ना तेरा पेज स्टार्ट. सर आए जब बोलना तेरे को तब. नेक्स्ट हो गया पूरा सबका. यार कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया.
बोलना उसका भी वापस आएगा, इसका भी वापस तो मैं वापस आ गया ना, स्विच कर दिया। पेंसिल का वेट करना है। सर जब बाहर गए थे तो बाहर क्यों नहीं ना? सर क्या बोले, अपन क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। क्वेश्चन आंसर तो आज स्लाइड्स 3 क्यों बनाई थी? 2-3 स्लाइड्स है ना अलग अलग, पीपीटी अलग अलग बना रही हाँ 3 तो भी अलग अलग है। 3 नीचे कलर नीचे। सर जैसे मेरी ऑरेंज है, इसकी ब्लैक है, इसकी grey है। आज का टॉपिक LODR। हाँ तो इसमें 3 चैप्टर कवर किए, फिर हमने दो और इसमें सर ये बोर्ड इवैल्यूएशन का गाइडेंस नोट और था उसी सर्कुलर में। उसी सर्कुलर में। हाँ उसका तो नहीं गलत है। हाँ ये सब सबसे ये बड़ा था, इसलिए फिर इसको इंडिविजुअल कवर करना था। खत्म तुमने 3 ही मिनट में कर दिया। सर एक्सप्लेन तो कर दिया ना। ये कब से रिक्वायरमेंट? बोर्ड इवैल्यूएशन सर लिस्टेड एंटिटीज पे होता है। कब से है? कहाँ लिखा तुमने कि इस दिन से रिक्वायरमेंट है? सर ये देही है, ये गाइडेंस नोट में तो। है डिस्क्लोजर का तुमने बता दिया, वो डिस्क्लोजर जाना क्या है? सर कब एनुअल जाना? रिपोर्ट में एनुअली जाना होता तुमने लिखा उसमें, किसी को पता चला इसने बताया कि इसने बताया तब किसी को पता है। चला? नहीं पता। बताया नहीं नहीं। बताने का तरीका जो है ना वो ये होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए। इन बच्चों को सबको ये तो पता होगा एनुअल रिपोर्ट क्या होती है। एनुअल रिपोर्ट में अपन क्या जानते हैं कि अपनी जो बैलेंस शीट साइन होती है ना वो छप जाती है। तो कभी देखी एनुअल रिपोर्ट किसी ने? तुम में से देखी किसी ने एनुअल रिपोर्ट? किसने देखी हुई? लिस्टेड एंटिटी की एनुअल रिपोर्ट एक इंटरव्यू देखी है। जो बोला कौन है किसी ने नहीं देखी? तू बोला ना किसी ने नहीं देखी, सब खुद ने नहीं देखी। आवाज तो तेरी सी लगी मेरे को। पहली बात तो जो यहाँ बैठता है वो ऐसे ही गड़बड़ होता है, सर के पीछे बैठते हो सबसे खूब मोबाइल चलाते हैं। तो बोर्ड किसने देखी? यहाँ बता भाई, किसने देखी? हाथ किसने खड़ा करा था? इसको तो दिखवाई गई थी अभी। है ना तेरे को? तभी देखी होगी तूने फर्स्ट टाइम। अब तो उसने देखी अभी, बताएगा उसमें क्या क्या होता है। बोर्ड रिपोर्ट? हाँ नहीं नहीं, मैंने बोर्ड रिपोर्ट बोला ही नहीं। मैंने बोला एनुअल रिपोर्ट। सर बेसिकली उसमें डिस्क्राइब क्या करते हैं? उसमें मतलब एनुअल रिपोर्ट मतलब रेशियोज के बारे में। सबसे पहले रेशियो आ गया उसमें। बेसिकली एंटिटी के बारे में बताते हैं कि है ना एंटिटी क्या है, उसने है ना क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, उसके है ना ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो सोशल रिस्पांसिबिलिटीज क्या है। हाँ सही है तू जो बोल रहा है, लेकिन तरीका क्या होता है? एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? मैं मतलब कोई भी लिस्टेड एंटिटी अपने इन्वेस्टर्स को EGM से पहले पूरे साल की परफॉर्मेंस को बताने के लिए एक एनुअल रिपोर्ट शेयर करती है विद EGM नोटिस। तो पहले क्या होता था, बाकायदा डाक से आपको नोटिस आता था 30 तारीख को EGM और आपको यहाँ आना है। उसके लिए साथ में उसके वो एनुअल रिपोर्ट आती है कि आप पूरा पढ़ के आओ, समझ के आओ। हमने ये करा, फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आओ। और उसके अंदर क्या क्या मेरे रेजोल्यूशंस पास होने वो डिटेल में रहते थे। उसका पूरा डिस्क्लोजर आता था। तो नोटिस स्टार्ट ऐसे ही होता था कि हम ये हमारे एजेंडा रहेंगे, उसकी डिटेल दी रहती थी पीछे किस टॉपिक पे क्या डिस्कस होने वाला है। जैसे किसी को अपॉइंट करना है तो ये ऑडिटर अपॉइंटमेंट जैसे एक मान लो बेसिकली जनरली होता है कि ऑडिटर अपॉइंट करने वाले हैं, ये है। लेकिन वो AGM का नोटिस के साथ फिर आती थी एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में जनरली क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है इंडेक्स, इंडेक्स के बाद चेयरमैन मैसेज या मैनेजिंग डायरेक्टर मैसेज। उसके बाद कंपनी खुद के बारे में बताती है, मैंने ये करा वो सब तो होती है बेसिक चीज़ें। उसके बाद कहीं ना कहीं से कोई रिक्वायरमेंट आती है, सेबी की रिक्वायरमेंट है कि ये छाप दो, ये डिस्क्लोजर दे दो। एक फिर कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है कि बोर्ड रिपोर्ट दो, अब आपकी एनुअल रिपोर्ट दो, उस पर ऑडिटर की रिपोर्ट दो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, उस पर ऑडिटर की रिपोर्ट दो। प्लस जैसे मान लो तेरे ऊपर अगर CSR एप्लीकेबल है तो CSR की रिपोर्टिंग अलग से आती है। तेरे ऊपर जैसे अभी नई रिपोर्टिंग बताई ना तुमने बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, तो वो रिपोर्टिंग 22 तारीख से शायद स्टार्ट हुई है। तो उसकी रिपोर्ट भी उसी में आएगी। अगर कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ रिपोर्टिंग मेरे को अगर है तो वो आएगी। पोस्ट ऑडिटर का कोई स्पेसिफिक होएगा तो वो आएगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी अगर अपन जैसे लास्ट ईयर तक ONGC के ऑडिटर थे, तो अगर तुम्हें से ONGC कोई नहीं गया होगा, जो गया वो तो हाथ कर लो।
कोई गई है खाली सीनियर कोई हो रही है। तो ONGC की तो HO भी गई है, तो तूने तो बोर्ड को एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी, तूने भी हाथ नहीं खड़ा करा था, जानबूझ के नहीं करा, क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो उस पे CAG की ऑडिट भी एप्लीकेबल होती है, तो CAG ने जो ऑडिट करी उसका जो रिपोर्ट है वो भी उसका पार्ट बनी। तो एनुअल रिपोर्ट पूरे साल का एक आईना होता है, कंपनी ने क्या करा। तो रियल में इन्वेस्टर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए अब उसमें सेबी धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंजेस करती जा रही है, अमेंडमेंट्स लाती जा रही है कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो, कि सब कुछ पता हो। तो तुमने पढ़ा, इसलिए जैसे मैं आया था तब वो स्टार्ट करा, उससे पहले मुझे पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो तूने तू ही था ना, क्या स्टार्ट करा तूने? एनुअल बेस्ड वो कौन से थे? इसमें एनुअल सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट और BRSR एक सेक्रेटरी रिपोर्ट भी इसी का पार्ट होती है। सेक्रेटरी कंप्लायंस, सेक्रेटरी जो कंपनी सेक्रेटरी वाली कंप्लायंस होती है वो मोस्टली कंपनीज एक्ट से रिलेटेड होती है। कंपनीज एक्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है, सेबी की वैसी ही कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कंपनीज एक्ट भी बोलती है कि ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, सेबी बोलता है कुछ तो सिमिलर होती है, कुछ एक्स्ट्रा होती है लिस्टेड कंपनीज में। उसमें भी कुछ लिस्टेड में भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। बताओ, जैसे इनमें इसने जो यस क्या था, वो किस पे एप्लीकेबल होती है? इन्होंने सुना, उनको पता है, वैसे तूने सुनाया नहीं। नहीं सर, वो एक्चुअली नहीं बोल दिया था सर, विकास सर नहीं बोल दिया था। तब पता होगा, इसके बोलने से तो नहीं पता लगता। सबके सामने बोला सर, नहीं, सबके सामने पढ़ा है सर बोला भी नहीं। वो पढ़ा है, उसको बोलना नहीं बोलते। उसमें कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। अपने को जरूरी नहीं कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो वहाँ बोलना चाहिए। मेरी तरह बोलते हिंदी में एकदम देशी भाषा में, ये लिखा हुआ पढ़ तुम लोग, बता मैं ऐसे ही देता हूँ। इसने बोला ना, इतना बोला, बोल पाया बोला, बाकी वैसे समझा दिया। तो वैसे मतलब तेरे को ऐसे नहीं करा, तूने बनाई अच्छी है, इसने स्लाइड अच्छी नहीं बना रखी, मतलब जस्टिफाई भी नहीं करा था, जहाँ पेस्ट करा कर दिया, ऐसे ही था पेस्ट करा है। आज ही बनाई हूँ तो ऐसे नहीं करा। सबका अपना अपना है, तूने उस कलर वलर अच्छे दे दिए, तूने दिमाग लगाया कि कैसे उसका ट्रांसमिशन हो जाए, इसके ऊपर से नीचे से आए। ये क्लासेस होती इसीलिए है कि सीखो। तो ठीक है, कुछ चीज़ तूने अच्छी करी, कुछ इसने अच्छी करी, तो वो चीज़ को अगली बार सही कर लेना। मैंने उसकी देखी नहीं, उसने क्या करा। एक्सप्लेन जब करे ना तो तेरे को ये समझ में आनी चाहिए। मैंने पढ़ लिया, मेरे को पढ़ने में 2 घंटे लगे, वो चीज़ 2 नहीं लगे, ज़्यादा ही लगे होंगे। कितने दिन से पढ़ रहा था? घंटे लग गए पूरा का है ना। और तेरे को वो चीज़, तेरे को हार्डली 30 मिनट 1 घंटा मिला, तो मैं उस तरह से पढ़ के उस तरह से एक्सप्लेन करूँगी। मुझे जो चीज़ समझने में 3 दिन लग गए, मैं इन लोगों को 1 घंटे में प्यार से समझा दूँ। टीचर यही तो करता है। तुम्हारा तेरा फेवरेट टीचर होता होगा कोई ना कोई, होता होगा ना। तूने इतनी क्लासेस ले रहा है, कर रहा है, तो उनमें से सबसे अच्छा वही लगता होगा जो सबसे इजी तरीके से एक्सप्लेन करता हो, थोड़ा हंसाता हो, है ना। कौन है तुम्हारा ऐसे? अभी टीचर्स में जानता नहीं कौन चल रहा है, फैशन आती है सबकी, तो बीच में कुछ भंवर घोराना करके चल रहा है, अभी भी है वो। है ना, तो उसका एक तरीका है पढ़ाने का, हमारे टाइम नहीं था, मैं नहीं जानता क्या तरीका है। एक इसकी तरह कोई पढ़ाए, उस टीचर से कोई पढ़ेगा। मैं तेरी नहीं कह रहा, आधे ऐसे ही करेंगे, सब स्लाइड्स बना लाते और पढ़ लेते। मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रहा। सीखने का तरीका कि 3 दिन को 30 मिनट या 1 घंटे में इस तरह से एक्सप्लेन करें, इनके दिमाग से कभी नहीं। अब वो उसको क्यों पता? क्योंकि सर ने बताया था, उसने बताया, वो नहीं पता उसको। तो खुद ही वो बैंक वाली रिक्वायरमेंट आई उस टाइम, क्या बता गया मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने पढ़ा, फिर मैंने कहा ये रिक्वायरमेंट कब से आ गई कि सेबी बताएगी इतने का प्रोविजन करना। सेबी तो बता ही नहीं सकती क्या प्रोविजन करना, वो तो आरबीआई बताएगी। सेबी ने तो खाली इतना सा करा है कि भाई जो अगर तुम प्रोविजन कर रहे हो उसमें कुछ मटेरियल इधर उधर हो रहा है ना, तो भैया रिपोर्ट करो। वो स्पेसिफिकली बैंक्स पे करा है, क्योंकि बैंक्स में पिछले 5-7 सालों में बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये तो इंटरेस्टिंग चीज थी यार, जो पूरा टॉपिक था ना। तुम में से 90% कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने वाले। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मोस्टली कंपनीज लिस्टेड होती हैं, वही अच्छे पैकेज देती है ना। उसमें ये सब रिपोर्टिंग की तो करनी होती है। तुमको उस एनुअल रिपोर्ट के किसी एक पेज का पार्ट बनना है। अगर हेड ऑफिस में बैठे हो, वैसे मान वहीं बैठो, तुम कोई सेक्शन में हो, 1 या 2 पेज तुमसे रिलेटेड होते हैं, तो एटलीस्ट। ये कहाँ था? ये वो होगा क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ इसका वो कहाँ दोस्त, 3-4 है ना टोटल।
गौरव भी दो, अक्षर है, आज वो दोनों नियम है। तू बाहर से बना ला है, क्वेश्चन आंसर बना ला है। तेरे को किसने दिए? तूने और किसको दिए? किसी को नहीं दिया। रेड कलर की गाड़ी। हाँ, फिर भी मैंने पिछली बार बोला था कि कुछ एक क्वेश्चन गलत कर देना और एक में वो तो सारे ABCD तो ऑटोमेटिक ही लेता है। उसको मजा मैं चिल्लाती हूँ बैठा। शुभांशी घर कौन होता है? नवंबर 24 तुम्हारे बैच में कौन हुई? जो यूबी सर आएंगे। फोटो के लिए हाँ तो फिर कर दो फिर जो टाइम पास। तो सर फिर मेरी 2 स्लाइड में आखिरी कवर करता हूँ सर, वो अलग टॉपिक है मतलब। चलो बताओ सुनो भाई, इसके अब उसको उस तरीके से समझाना कि समझ में वो होगी। तो नाम क्या था? मेहुल दीवान। मेहुल भौरा, मेहुल दीवान। क्या बीच में? हाँ सर आखिरी में। चल तो भाई हाँ चलो भाई इधर देख लो सर, ताली में शांत। So I want to wrap up my presentation with a quote: "Don't get so busy making a living that you forget to make a life. So always maintain your work-life balance." एक चीज बताओ, ये किस पे एप्लीकेबल होता है? वर्क लाइफ बैलेंस। तू बता ना, पूरा सुनेंगे सर, लेकिन तू लाया है तो पूछ रहा हूँ किस पे एप्लीकेबल होता है? ज़्यादातर जो जॉब्स वगैरह करते हैं तुम अभी कर रहे हो सर, हम पे तो अभी नहीं मानते हैं तो आज की जरूरत है सर, अभी जरूरत नहीं है, पर सर इंडिया में मतलब सर इतना मानते नहीं ना सर, इसलिए मैं थोड़ा प्रमोट नहीं, मैं प्रमोट तो कर प्रमोट तो अभी नारायण मूर्ति जी करके गए थे थोड़े दिन पहले, सुना था? हाँ क्या करें। तो फिर जब ऐसी चीजें लाओ ना तो उनको पता होना चाहिए आजकल मार्केट में चल क्या रहा है। किसको पता है नारायण मूर्ति जी ने क्या बोला था? जब तू ऐसी चीज लाएगा तो नॉलेज तो लेके ही नहीं है। कौन बोला 70 आवर्स वर्क? किसको पता है सबसे ज्यादा? पढ़ा सुना किसने था उनका? सही है, जितना देखा किसी ने स्टेटस पे देखा, किसी ने ट्विटर पे देखा। किसको पता है मतलब क्यों बोला हूँ? किस अपन ये लाते हैं US से उठा के लिया है कि भैया मैं 6 घंटे 4 घंटे काम करूंगा बस, बाकी सब लाइफ है ना? यही तो कहना चाह रहा है तू? कहना सर मैं ये नहीं कहना चाहता। तो पता नहीं जो कहीं कहना मैं बता दूं। चल पहले तू कंप्लीट कर फिर आते। हाँ चल। तो जैसे अपन ने मतलब बहुत वर्क कर लिया, जिसकी इच्छा हो रही है उसको लगा दूंगा मैं। ऐसे बोलते जाना ही फिर। चलो तो जैसे अपने मतलब कुछ भी रिक्रिएशन एक्टिविटी वगैरह होनी चाहिए, मतलब सर कंटिन्यू अपन वर्क करेंगे ना तो सर अपनी मेंटल हेल्थ वगैरह सब इफेक्ट होती है, तो मेरा ये मानना है। बस तो सर मैं तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ तो बोला नहीं। बस ये बैलेंस वगैरह, वर्क लाइफ बैलेंस पे थोड़ा प्रपोज करना था मुझे। तो कर तो सही। कर ही नहीं पाया भाई, कौन इससे इंस्पायर हुआ? अपन सीरियस टॉपिक में, बहुत बड़ा टॉपिक है, आज की डेट में लोग मिसलीड हो रहे हैं।
इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ये कुछ क्या तरह इसके पीछे बस ये है। इसके पीछे वाला पढ़ना था क्या? तो वो आपको आपके लिए अगर आप नहीं सर, मतलब वो खुद ही अपन पढ़ सकते हैं कि अगर अपन सर वर्क लाइफ बैलेंस फॉलो करते हैं तो अपनी यूनिक है। तो तू बोला था भैया मैं बताऊंगा होता है क्या वर्क लाइफ। हाँ तो सर अपना जैसे और सीरियसली पहले सुनो। हाँ क्या होता है वर्क लाइफ बैलेंस? हंसो मत, शायद बाहर कुछ गेस्ट आए हैं सर, हो सकता है उनको इधर लेके आए, है ना? तो इसको डाउन करते वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ अभी तो बाकी है। तो बोलना था कि कुछ तो सर हो सकता है प्राइस दिला दो तुमको सर, वो बाकी रह गया। ये है। हाँ, अपने यहाँ एक दिवाली आई थी, होली आई थी, करके कितनी बार टीम में चले जाते हैं। अपना बहुत तगड़ा चलता है ये रीजनल होली सब। सर फिर भी थोड़ा मतलब इवन टॉपिक हो गया, प्लस वो क्वेश्चन आंसर बचा कोई सर वो बात में कर ली अब तुम एक बार डाउन कर दो। इसके चलाइए। अब बंद है, इसको एंड ही कर देता हूँ।